Welcome, guys. Welcome to another episode of Expiry Trading with ICICI Direct. As usual, we have Mr. Rajdeepak Singh with us. Raj bhai, hi, आप मेरे बाजू में बैठे हो, कैसा लग रहा है? हाय हाय हाँ गौरव, आपके ज्यादा तुम्हारे साथ मैं परेशान हूँ। ओके, आप ही पहले, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे और जो कॉल्स हमने आज दिए हैं उसके बारे में भी हम अभी बात कर लेते हैं। जो जो कॉल सुबह से आपने दिए उसके बारे में अपडेट। स्टार्ट विद द डेटा फर्स्ट। तो सुबह जिस तरह की गैप डाउन ओपनिंग हुई उसके बाद एक बार तो हमने देखा था पुट ऑप्शंस के अनवाइंड। इस रिकवरी में अब हम देख रहे हैं कि कॉल ऑप्शंस किस तरीके से अनवाइंड हो रहे हैं। बट निफ्टी फ्यूचर्स जो है आपके करीब 15 पॉइंट डिस्काउंट में है और ओवरऑल मार्केट। आप अपने से जो कर इसमें lag हो रहा है, आप जूम ज्वाइन कर लो अपने इसमें। मेरे में जूम में मैं ज्वाइन हूँ, तुम्हें अनम्यूट करना पड़ेगा। स्टार्ट कर। एक मिनट करो, बस थोड़ा सा डेटा को क्लियर कर लो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था अभी तक कि some unwinding among puts, but with the market recovery, those put writers have come with a vengeance, and now 19,600 put is holding somewhere close to 4.5 crore shares, 4.2 crore shares. तो 19,600 के नीचे मार्केट का जाना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है फॉर द टाइम बिंग। और अगर इस पूरे वीक की बात करें तो वी हैड बीन दिस ऑफ दिस ओपिनियन दैट 19,600 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल सपोर्ट. And if you remember last time also, anybody who has asked for 19,700 call and put listed. So we said that would be the great one for the week. And I still believe that the expiry, the way data is placed right now, so the way data is placed that we are likely to settle between 19,600 and 650, most probably nearby 19,600, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल व्यू जो अभी तक था मार्केट में कि हमने एक बहुत बड़ी शार्प डिक्लाइन देखी मॉर्निंग में और उसके बाद अचानक से इतनी अच्छी रिकवरी देखी, तो शायद अब वो देखने को ना मिले। यहाँ से आगे इट कुड बी मोर ऑफ अ रेंज बाउंड। हाँ, 650 के ऊपर अगर दोबारा से मार्केट सस्टेन करने लगता है then perhaps am I audible, guys? Please say yes if my screen is visible and I'm audible to you guys. Yes. फॉर द टाइम बिंग हमको ऐसा लग रहा है कि 19,650 का जो एक लेवल है वो एक छोटे टाइम के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। थोड़ा समय यहाँ पर स्पेंड होना चाहिए मार्केट का एंड उसके बाद वी माइट सी whether there is a directional move in the market or not. But as of now, for the next half an hour, I would say 1 hour, Nifty is likely to be a range bound. 600 के नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ एक्सपायरी। मॉर्निंग में भी आपसे जब बात हुई थी गौरव तो क्लियरली बोला था कि 600 के नीचे मुझे एक्सपायरी नहीं लग रही है। और अभी भी मेरा व्यू ये है कि हाँ, मैं 600 के नीचे नहीं है, बट क्या मैं 700 की तरफ जा रहा हूँ? तो एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक मार्केट विल मूव टुवर्ड्स 700 आल्सो। 600 से 650 के बीच में मार्केट को सेटल होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कॉल बाई करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि आप कॉल बाई करने का सेंस बनता है। more of a range bound bias to marginal negative, not particularly negative, marginal negative. अगर मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव खेलना है तो मैं 19,650 का पुट जो अभी 18 रुपए में चल रहा है उसको देख सकता हूँ। उसको मैं सोच रहा हूँ कि शायद एक बार के लिए मुझे 30 रुपए तक का भाव दिखा दे, बट कॉल ऑप्शंस को मैं 28 का 40 होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। तो रेंज बाउंड टू मार्जिनल नेगेटिव बायस विच वी आर हैविंग राइट नाउ इन निफ्टी
तो एंड एक्सपेक्टिंग सेटलमेंट इन द जोन ऑफ 600 to 650। बेटर रहेगा कि हम जितना 600 के पास सेटल होते हैं वो अच्छा रहेगा, कि हमारा ग्लोबल मार्केट और बाकी सारी चीजों से बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए मार्केट में। हमारी रिकवरी रही, अच्छी रही, डेटा के हिसाब से हमने 19600 होल्ड किया, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तो थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव है, मार्जिनल नेगेटिव, बट वी आर एक्सपेक्टिंग 600 लेवल्स टू बी हेल्ड। अभी हम हर्डल के पास है 650। आई डोंट थिंक मार्केट शुड सेटल बियॉन्ड दैट। सो ओवरऑल दैट्स हाउ वी शुड ट्रेड टुडे। ओके राज। ओके तो राज भाई ये तो निफ्टी हो गई। निफ्टी में भी फिलहाल के लिए देयर इज नो, यू डोंट सी एनी डायरेक्शनल मूव हियर एंड वी वुड बी समवेयर बिटवीन 600 650। सो ऊपर के कॉल आपने बेचने के लिए कहा है 650 का, जो चल रहा है फिलहाल के लिए 16 रुपए के आसपास। नहीं, मैंने कॉल बेचने को नहीं बोला गौरव। मैंने कहा है कि अगर हो सके तो 650 का पुट ले सकते हैं, जो अभी 18 रुपए का चल रहा है। सॉरी हाँ, सॉरी 650 का पुट बाय कर सकते हैं, तो समवेयर नियर 17.8 to 18 rupees one can buy this position. So people who want to trade for this expiry, the call from Mr. Rajdeepak Singh is to enter 19,650 put, which is trading currently near 17.8 to 18 rupees with a stop loss of Rajbhai. I'll keep it a stop loss around 10, and the target would be not much. Somewhere around 25 to 30 rupees would be my target. Okay. 28 to 30. Okay. So basically, a very small target this time, not a high-fi target which Rajbhai gives, 3x, 4x. So viewers, whoever wants to trade this expiry, this 650, 19,650 put at 18, 17.8, 18 for a target of 28 to 30 with a stop loss of 10. That is the recommendation for this expiry. ओके राज भाई, तो ये तो होगी निफ्टी। निफ्टी का आपने ये दे दिया है, आपका व्यू दे दिया है, एक्सपेक्टिंग एक्सपायरी बिटवीन 600 and 650। सो probably we are on the upper end of the range that you are expecting, so probably expecting एक छोटा सा रेंज नीचे की तरफ आ जाए 620। even if it comes to 620, I think this will become 30 rupees easily. Okay, so Raj bhai, this is about Nifty. I know बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी थर्सडे को, बट अभी आप हो तो मैं आपसे बैंक निफ्टी पे भी व्यू मांग लेता हूँ। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन बैंक निफ्टी राइट नाउ? देखिए, वीकेंड में एक बहुत बड़े आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आएगा, और अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे तो हम लोग लगातार एक ही चीज है कि जो वीकनेस है वो बैंकिंग में है, जो वीकनेस जो है, जो भी शॉर्ट पोजीशंस हैं, दे आर पर्टिकुलरली इन द बैंकिंग स्पेस। तो अगर हम लोग जो वीवैप है सीरीज का, दैट इज अराउंड 44,500। तो बेस्ट केस सिनेरियो फॉर द बैंक निफ्टी इज टू मूव टुवर्ड्स 44,500 पोस्ट आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट। एनी साइन ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और अगर मुझे खेलना होगा शॉर्ट कवरिंग के लिए, तो आई विल प्ले ओनली बियॉन्ड 44,500। हाँ, यहाँ पर क्या मैं फ्रेश शॉर्ट करूं अहेड ऑफ द रिजल्ट? आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ओके, ऑलरेडी 13 रुपए का हो गया है, ऑलरेडी 13 रुपीज। ओके, सो जिसने भी एंटर किया वो एग्जिट करे कि यू कैन होल्ड? नहीं, अभी तो मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ है। we'll wait now, let's see. fine, There's no point. Yes. Yeah, ठीक है। ओके, तो बैंक निफ्टी में मेजर हेवीवेट आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है, तो वी विल नॉट कमेंट ऑन इट, एंड आल्सो वी कैन नॉट कमेंट बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक इज आवर पेरेंट, सो वी डू नॉट कमेंट ऑन एनी ऑफ द आईसीआईसीआई ग्रुप कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड ऑन द मार्केट ड्यू टू कंप्लायंस इशू, कंप्लायंस गाइडलाइंस। ओके, सो वी विल स्किप दैट। व्यू राज भाई, लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी, थोड़ा वो भी बात कर लेते हैं आपसे कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ फिन निफ्टी एंड फिन निफ्टी पिछले 5 हफ्ते से 20,000 के नीचे है। हाँ, और अब मंथली एक्सपायरी आ रही है, राइट। अभी भी मुझे 20,000 जाता हुआ नहीं लग रहा। 20,000 के नीचे ही ये मंथली एक्सपायरी इसके नीचे होनी चाहिए। बेस्ट केस फॉर द फिन निफ्टी कुड बी समवेयर क्लोज टू 19,850। ओके, बियॉन्ड दैट देयर माइट बी अ round of short covering which may take it towards 20,000, right, but 19,850 के beyond नहीं लगता, first because that is a major hurdle, and at any given day I'm not expecting it to surpass 20,000. जो भी रिजल्ट आए हैं as of now, they were not exciting as per me and as per our research. IndusInd Bank was a bit different than the rest, but overall financial services में जो स्टॉक्स हैं उनमें कोई बहुत अच्छे रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। तो हो सकता है कि ये जो रेंज बाउंड बायस है, देखिए आप मार्च से लेकर जुलाई तक वन वे मार्केट में बहुत ज्यादा चला है, राइट।
17,000 से आप ऑलमोस्ट 20,000 हो गए थे। राइट। तो यहाँ पर क्या फर्दर अप मूव या मतलब एक छोटा सा कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन डजंट मीन कि जस्ट consolidation could be much higher. Yeah. So 3 months of consolidation has happened till now. अगर एक बार के लिए मेरा निफ्टी दोबारा से 19,800 850 के ऊपर जाता है, then we can form a fresh positive bias. But till then, what I believe that we are more into the consolidation right now, and that should continue. Okay. Okay. Perfect. So viewers, right now there's only one call from our end. That was 19,650 put, which was given near 17.18 rupees for a target of 28 to 30 with a stop loss of 10. It is trading near 14 rupees right now. Turant, it has come down very fast, but still people who have entered this trade is still valid. By chance, Rajbhai, someone has entered near 15, 14 rupees. Do you think they should be? नहीं, if someone wants to enter, देखिए अभी क्या है कि मार्केट में कवरिंग ट्रेंड चल रहा है। राइट। हाँ, तो 2 दिनों में जो हुआ, और आप अगर देखोगे तो कौन सा स्टॉक खींच रहा है, तो दैट इज योर एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक बीइंग वन ऑफ द मेजर लैगार्ड और वहां पर आ रहा है, तो आई वुड से दिस इज नाउ इंडेक्स मैनेजमेंट विच इज हैपनिंग, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर लेकर ही मार्केट को सेटल करें। बट मुझे अब मैं आज के लिए जो मुझे लगता था कि जो होना चाहिए मार्केट में हो गया। अगर ये यहाँ से लगातार चलता जाएगा तो दैट मीन्स आई एम गोइंग रॉन्ग, and if I'm going wrong I cannot change my view just over a span of half an hour कि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाऊं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इन द मॉर्निंग I was positive, I was expecting towards 650 and that has been over. Now my view is that we might settle somewhere close to 600. So if I'm going wrong then okay, it's fine, but that's my view and I'll stick to my view. Absolutely. That is okay. That is a very great thing, that at least when someone goes wrong, accepting that you have gone wrong is also a big thing in the market. Also, Rajbhai, we had given a lot of calls since morning. I think aaj next week ke expiry ka, if people, we had spoken about our one click derivative because we start our show at 12 p.m. But one click derivative, we send a recommendation in the morning itself on every day, but Thursday as well. So before you guys join here, you guys can first look at the recommendation is one click derivative, because we prepare our session based on, our session is prepared based on the calls given on in the morning there. So Rajbhai, can we just have a look at the calls that has been given since morning on index, particularly Nifty? देखिए, सबसे पहले सुबह आते आते हम लोगों ने निफ्टी पे एक पुट बाई किया था जो हमारा तुरंत टारगेट हो गया, एंड उसके बाद वी हैड टर्न पॉजिटिव, वी हैव सोल्ड पुट. We had also given a strategy in Nifty with a positive bias where we have bought one call option and sold two call options or OTM strike. But because of the sharp strategy, we have exited near the cost. और अभी जो आप लोगों को भी दिया है, मतलब just around 11:55, we had recommended this buy put of 550, sorry 650 strike. So that's what for Nifty intraday as of now. Okay. I think next week's call was given. I think 550 put or 500 put was sold. Okay. So viewers who could not, who like, because we understand the time issue. Sir, अगर okay, 1 second, zero नहीं तो okay, we are getting some questions, Raj भाई, मैं वो एक एक करके questions ले लेता हूँ.
The put option must have approached. Karanbir sorry sir, yes, the put option is near a stop loss of 10, but now it is back to 15 and a half. 19,650 put, which was it was recommended near 17.818 rupees. It is at 15, so 5 points away from a stop loss and 3 points down from our suggested price. So yeah, that's the thing here. Rajbhai, there is one more question that view on 19,700 call option. But as you have said that your view is negative, so we'll continue. No, my view is not negative, Gaurav. My view is now that whatever happened till now, the upsides which we were expecting has been panned out. I don't see much upsides beyond 650. Okay. So if someone is looking at कि market may move towards 19,700, सर अगर ये short covering trend continue रहा तो 700 के हम 750 भी जा सकते हैं, but that's not my view. I'll stick to my view. जो मेरा व्यू है वो ये है कि मैं 650 से ज्यादा ऊपर या 650 के ऊपर भी मैं एक्सपायरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और मैं उस व्यू के हिसाब से मैंने जो है 650 का पुट बाय कराया है। सर गलत जाने का मेरे पास पूरा अधिकार है। So I am not someone who says that okay, my strike rate is 100%. I had been wrong on multiple occasions, and today might be another day when I go wrong. But as of now, I don't see much upside beyond 650. ठीक है, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है, बट जो भी वो पुट राइटिंग है 600 पुट पर है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 600 के नीचे एक्सपायरी मुझे लग रही है। Between 600 to 650 is what I am looking at for the settlement, and in between if market moves towards 620, तो मेरा ये 15 या 18 रुपए का जो ऑप्शन है वो हो सकता है 30 रुपए का हो जाए। So that is the final target. I think 28 to 30 is the target that you have suggested. Not expecting कि कोई बहुत बड़ा फायरवर्क यहाँ से मार्केट में मुझे देखने को मिलेगा। Okay. I'll take few questions then. प्रेम यादव, आप तो बहुत एक्सपर्ट लग रहे हो सर। आई थिंक okay. I'll just caution everybody that the views are please only take views from our expert, because if you we are okay if you take some other ones views as well, but we won't be responsible for that. Our view is rightly that 650 is the upper end of today's short covering rally, which has happened because Nifty has moved more than 100 points from today's day low, because I think 517 or some odd is the spot lows, and we are at 650 right now. The call which is given by Rajdeepak Singh is 19,650 put option near 17.818 rupees. Now it is near cost 1770 and a half, and the target is 30. Okay, so can 19,650 CE be sold? That is the question for you, Rajbhai. सर जिस तरह का व्यू है मैं मानता हूं कि वो बेचा जा सकता है, बट अगेन थोड़ा सा क्या है कि आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप कोई भी ऑप्शन सेल करते हैं। तो ठीक है, मैं अगर जिस व्यू से मैं जा रहा हूं उस व्यू से तो 27 रुपए को जीरो होना चाहिए। मैं इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं रिकमेंड कर सकता, क्योंकि थोड़ी देर में ये फ्यूचर बन जाएगा या थोड़ी देर भी मार्केट यहाँ पर रहा तो मेरा वो 17 रुपए का जो मैं पुट बाई करने को बोल रहा हूँ वो 10 रुपए का हो जाएगा, आपका कॉल भी में पैसा कम हो जाएगा। बट सर एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट योर रिस्क रिवॉर्ड। सो सेलिंग कॉल ऑप्शन इज नॉट दैट फ्रूटफुल। यस, perfectly fine strategy if you have that risk taking capability, but I cannot suggest it on a larger scale. Okay, so if somebody who's nimble with his stop loss, I think he can take this call that one can sell 19,650 call option near 20. I think it's near 28, 29. So Rajbhai, suppose someone selling it, so what would be the stop loss if बहुत मुश्किल चीज होती है कि जब इस तरह का मूव आता है कि 515 का आपने लो मारकर आपने 670 का आपने अभी हाई मारा है, और उसमें आप 25 रुपए का ऑप्शन बेच रहे हो 26 रुपए का, एंड यू आर आस्किंग फॉर एन स्टॉप लॉस, तो सर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ठीक है, मतलब अगर किसी को करना है तो लेट हिम डिसाइड द स्टॉप लॉस, बिकॉज इफ ही जस्ट बिकॉज ही इज सेलिंग आई एम प्रीटी श्योर दैट ही नोज द रिस्क फ्रॉम द ऑप्शन राइटिंग पर्सपेक्टिव। तो जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है अकॉर्डिंगली प्लीज पुट द स्टॉप लॉस एंड दैट्स इट। मतलब दे आर फ्यू गाइज जो छोटी लॉट में काम करते हैं, 1 लॉट 2 लॉट, एंड दे डोंट कीप द स्टॉप लॉस। सो हर आदमी का अलग अलग करने का स्टाइल होता है, तो अगर कोई एक बंदा एक ही लॉट कर रहा है तो ही कैन कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज ऑल्सो। Absolutely. What will be the stop loss? I think Arun, you can keep your stop loss according to your comfort. So yeah, that is the view from Rajbhai.
Can you suggest 0-0 trade, sir? 0-0 trade तो आज नहीं है. I think the action is already done, Rishi sir. But yeah, the call which is open is 19650 put option near 17.818, which is still open for a target of 28 to 30. Zia sir, I suffered a lot of glitches in priority circle interface, sir. I am sorry, sir. I am not aware of this because I'm not from the product side, but we will have our product manager, Mr. Sumit, from 1 p.m. So he may address your concern for sure. Okay. Okay. We'll take some questions. People have views on asking views on some stocks. So I'll first start with hello Shweta. Shweta is saying bought Voltas at 837 in cash. View on it. I'm taking this because Voltas is a part of FNO as well, or else cash views we are not taking because this show is particularly for FNO traders, derivative traders, and options traders, to be very honest. Well, yeah. Shweta, if I have to buy, I will buy the stock. Okay. At CMP. Okay. See, in the morning itself, we had a discussion about the stock, and so what has happened in Voltas, that first leg of upside towards from 750 to 900 was triggered by short covering. अभी जो भी इसमें weakness आई है, could be because market related weakness or whatever the reason, but I don't see stock moving below 800, और 800 तो छोड़िए, मैं शायद इसको 810 के 810 के नीचे भी नहीं देख रहा हूँ. So in that scenario, one can look at it. आपने कैश में लिया है तो that is I would say is further suits you. So what I'm expecting in the short term stock to move towards 860. Ahead of result we can see stock moving towards 860, and उसके बाद मेरे ख्याल से result will give you further direction move. But as of now 860 is the possible target in the short term for the stock. Okay. आप चाहें तो 810 का stop loss लगा सकते हैं, 815 का भी चलेगा. Okay. And to be very honest, viewers, here you will not get long-term view or positional views. We are traders. This is everything is based on derivative trader. It is based on derivative data. So that's the thing. And also, Rajbhai, the put which was suggested near 18 has made a high of 22 when we were speaking. Now it is hovering near 21, 21.5. Let's see if we can reach the target. बाद में बात करेंगे. आई थिंक इसका स्टॉप लॉस चेंज करके भी कुछ मतलब नहीं है. 2 रुपए 3 रुपए का ही फर्क पड़ा है. बट आज जिसने कॉल बेचा होगा उसके लिए फायदा हो गया, बिकॉज वहां पे प्रीमियम ज्यादा. अगेन जो चीज व्यू से मैच कर रही है, मैं पुट खरीदूं या सामने वाला कॉल बेचे या फ्यूचर शॉर्ट करे, दैट डिपेंड्स. बट अगेन इट कम्स बॉइल्स डाउन टू रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी. तो जो ऑप्शन जो बेच रहा है उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इज इंटायरली डिफरेंट. मतलब मेरा पुट पे पैसा ना भी बने बट उनका शायद कॉल में पैसा बन जाए कॉल राइट करके. बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कितना रिस्क सामने वाले को दे सकता हूँ. Yeah, absolutely. So viewers, if you have taken this position, please you can let us know that you have taken this position or not, because right now it is trading about, it is about 23 right now, 23 and a half. 23 and a half is where we are. So I think many would have entered near 15, 16 as well. Many would have entered near 18. Our recommendation was between 17.8 to 18 rupees. Now which we see is at 23 and a half, basically 5-point gain from our recommended level. Okay. And viewers, please remember the target is 28 to 30. It just went to 25 and it is hovering near 24 and a half. So please be very strict with your target. There is no big target here. The target is 28 to 30. If you are a safe player, you can book whenever according to your comfort as well. Our target is 28, between 28 and 30. We will exit this position between 28 and 30. Rest is up to you. We saw a high of 25. Now it is near 22, 22 and a half. Thank you, Karanbir sir. This is what it is, that we nobody is 100% right in the market. It is not my credit. Credit goes to Rajbhai. Rajbhai was like, he held his view even when the premium was near 12 and a half. So yeah, the entire credit goes to Rajdeepak Singh, and it is his credit to be taken. I am nowhere to be involved here. The call, Milind Chaudhary said the call was to buy 19650 put near 17.8, 18 rupees. That was the call. And yeah, now it is back to 19.9, 20 rupees. But people would have entered at 14, would have got a nice 10-point jump. That is almost close to double. So yeah, enjoy whoever had bought and took the profit till now.
So that is the view, Mota, like the larger view is Nifty. Rajbhai doesn't see Nifty moving beyond 650 and not below 600. So it will be a range bound affair for now because major movement for the day has been done because we made a low of 512 and made a high of 664. Almost 150, 155 point rally has been done. So assume given what we have seen in past 1 month, if the action is done in the first hour, then the index becomes range bound. So yeah, we expect the index to stay range bound for a while. Okay. Thank you. Damdar Awaz and Bulan Jasba. Oh, thank you, KG sir. Great to see. Great to see that a lot of people made profits. If you're making profits, please like button daba do yaar. Matlab that's our motivation. We are hungry for likes and we make sure that you are here for profit, so we make profit for you. Shall we enter again if given chance? Okay, now there's a second question. I'll answer this. If you have made profits, भूल जाओ जाओ. You have made the profit. आज पैसे ले लिए. Lock that profit and go home. There is no point over trading in this market. That is the thing. Okay. Someone is asking view on I was seeing some November Bandhan Bank November future. सो इसका रिजल्ट आया था कल और मुझे टाइम नहीं मिला रिजल्ट को ठीक से पढ़ने का या देखने का. बट अगर आप स्टॉक का प्राइस देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की भी जरूरत है. देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच इज क्वाइट नेगेटिव फॉर द स्टॉक इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स एट लीस्ट, एंड द वे इट हैज रिएक्टेड, सर टोटली अवॉइड. Yeah. Okay. So avoid Bandhan Bank. Just Dial, Deepika ma'am, Just Dial used to be in futures. Now it is a cash stock. So we do not want to like this entire session is particularly for traders and options traders and expiry traders. So we'll stick to that. We will not move on. We will not take cash stocks. Gaurav Chavan, we cannot give view on ICICI Bank since there's a compliance guidelines for us that we cannot cover. ICICI Group companies are not under our coverage, so we cannot take that. Okay. Volta's future, Vikram Singh sir. So we just covered it. Yes. So Rajbhai is saying that he expects 870 in the near term, 860 to 870 in near term. So that is his view. Now, if I'm not wrong, that was Shweta. Shweta ma'am has bought in cash. Now you're talking about futures. Yes. So from the stop loss perspective, keep a stop loss at 815. And अगर आपको थोड़ा सा उस तरह से खेलना है कि क्या हम कर सकते हैं इसमें, तो आप जो है चाहें तो इसका नॉट फॉर दिस सीरीज, आई एम सेइंग कि आप अक्टूबर सीरीज में इसका कॉल बेचने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 850 का कॉल भी अभी आपको केवल 8 रुपए का चल रहा है. बट इफ यू वांट यू कैन सेल दिस 850 कॉल समवेयर अराउंड 10 रुपीज एंड वेट, क्योंकि अगले 7 दिनों में इस 850 कॉल का प्राइस तो जीरो होने वाला है. अगर स्टॉक नहीं चला तो चलेगा तो आपका फ्यूचर में पैसा बनेगा. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज योर थिंग्स टू, और मतलब आप इसको एक कवर कॉल की तरह देख सकते हो विद ए स्टॉप लॉस एट 815. Okay. So target is somewhere 860 to 870 with a stop loss of 815. That is the Yes Bank. Raghvendra sir, sorry, we will not cover Yes Bank. Please do not ask this. Sir, your view. Okay. We'll come back to few. Okay, we're going to get a lot of questions. Okay. Market moved to 20,000 in monthly expiry. Naresh sir, we have released a technical report where we are expecting Nifty to reach 21,000 by December. With major supports at 19,200 to 18,800, 18,700 levels. So let's see. That is the recent report that we had released. It is released on a Twitter. You can see our Twitter handle, and to get these updates, you can join our Telegram channel as well. We have our Telegram channel, ICICI Direct. So that's where we put these things. Okay. Yogesh Kumar sir, I don't know what positions you have bought. Can I enter now in 650? No, sir. I think the answer is no. No over trading. Call once done. It did not hit 28, but it went to 25. I think many people made profit. There's no point entering it again because you will make money for us. Brokers will earn. You won't earn. So let's be very fair. This show is for you guys to earn. You guys earn. Don't let the broker make profit out of your losses. Okay. Chambal Fertilizer 1 month view.
सर मैं इन सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा ज्यादा बुलिश हूँ, और ज्यादा बुलिश होना थोड़ा बायसनेस ला देता है. But what I perceive that Champal should move towards 330 plus level. Could be biased here because it wasn't able to perform. But overall अगर आप फर्टिलाइजर या केमिकल स्टॉक्स देखेंगे तो पिछले 1.5 महीने से थोड़ी तो बाइंग आ रही है इनमें. They were not able to perform in line with the market earlier. Chambal Fertilizer hasn't able to move even beyond 300 for the entire series. बैन में भी बार बार आ जाता है, एक दिन स्टॉक चलता है तुरंत बैन में आ जाता है. So perhaps if stock starts moving beyond 300, then perhaps we might see some momentum here, but not negative, sure. But how to trade it, I am a bit skeptical कि आप इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत जल्दी बैन में आने की इसकी क्या बोलते हैं उसको, आदत हो गई है. तो not negative, sir, that is for sure, but how to play depends on you. Okay. Sir, your view on BPCL have bought future at 340 at October series. सर कुछ चीजें हैं जो मैं मतलब फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट इग्नोरिंग ओएमसीज. लेवल वाइज स्टॉक्स आर गुड, but the way volatility is there in Middle East, crude prices are near the highs, so not sure how these stocks will react. So एक चीज होती है कि देखिए, आप गलत जाना एक अलग चीज है, बट जबरदस्ती किसी चीज में व्यू बनाना नहीं चाहिए. एंड एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव ए व्यू ऑन बीपीसीएल. perhaps I may lose 10 or 15 points, but I will be looking at this stock only beyond 370, not before than that. No. तो आपके पास है, just keep an stop loss. I can give you a technical level from the stop loss perspective, because you bought at around 348, making 5 rupees of 4.5 rupees. So मैं आपको बड़ा स्टॉप लॉस देने का भी कोई फायदा नहीं है. आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रखिए सर, ज्यादा नहीं, उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है. और अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो निकल जाइए. और या तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसका कॉल ऑप्शन बेच के थोड़ा सा पैसा वहां से कमा सकते हैं. तो बीपीसीएल का 360 के कॉल में कोई पैसा नहीं है, कोई फायदा नहीं है आपको बोलने का. 350 के कॉल में 2.5 रुपीज है. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल दिस 355 कॉल एट 2.5 रुपीज एंड कीप एन स्टॉप लॉस एट योर कॉस्ट. तो अगर नहीं भी चलेगा, यहाँ पे भी रहेगा, तो यू विल बी एबल टू अर्न दिस 2.5 रुपीज along with whatever you had made money in your futures. Okay. Moving on, SBI. Okay. Shantanu, we'll come back to you. Just give us a moment. Last week asked about SBI, then it went down with news. Any views on SBI or HDFC Bank in next few weeks? Sir, before SBI, I think HDFC Bank is a laggard. Today HDFC Bank was the one which took Bank Nifty along with it on upside. But overall, HDFC banks are due to merger news, and there's no clarity in the results as well. So because of less clarity, the stock is not performing. But so I don't think so. Rajbhai will have any view in short term for HDFC Bank. देखिए, नीचे से बाई करना एक अलग बात होती है, बट दैट इज मोर ऑफ एक्युमुलेशन. व्हाट यू कैन डू, यू शुडंट बाय ऑन द होप कि हाँ इतना गिर गया अब चलेगा. तो आई वुड से कि अभी भी ये अवॉइड मोड में है. और देखिए, अब 1600 इस सीरीज में नहीं आ रहा, 1600 जिस तरह की राइटिंग है अगली सीरीज में भी आ जाए बहुत बड़ी बात होगी. बट 1520 से 1600 आना, दैट इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट 5% मूव इन द स्टॉक. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर इसको किसी को देखना है तो ही कैन लुक एट कि कम से कम वीकली बेसिस में तो नया हाई मारे. तो 1550 के ऊपर अगर एक दिन रहता है, देन ओनली ही शुड लुक एट एचडीएफसी बैंक. व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द स्टॉक टुडे, दैट इज क्लियरली फ्रॉम द इंडेक्स मैनेजमेंट परस्पेक्टिव कि निफ्टी को नहीं ज्यादा गिरने देना था, 19600 को होल्ड करना था. दैट्स व्हाई योर एचडीएफसी बैंक हैज कम इनटू पिक्चर. अदरवाइज आई डोंट सी देयर इज मच पॉजिटिविटी देयर इन द स्टॉक. सो प्लीज अवॉइड. And SBI? एसबीआई ये 600 नहीं निकाल रहा और फिर बार बार दे देता है. तो यस, स्टॉक इज नियर सपोर्ट. अगर स्टिल आई बिलीव दैट पोस्ट रिजल्ट वी शुड सी स्टॉक बियॉन्ड 600. देयर कुड बी सम गुड अपसाइड्स हियर, बट यहाँ पर मैं कॉल बाय करके नहीं जाऊंगा.
अगर मुझे इसको खेलना है तो मैं प्रोटेक्टिव जरूर खेलूंगा, कि अगर मैं फ्यूचर खरीद रहा हूँ या फिर मैं, तो फ्यूचर के साथ मैं पुट ऑप्शन लूंगा, या फिर मैं केवल कॉल ऑप्शन खरीद के थीटा जाने दूंगा। ओके हाँ ओके, मूविंग ऑन. Okay, we got a lot of questions. SBI, Amrit Lamba sir, PFC, REC, Farzi P. Okay, I know there is something. There's something. सर, अमृत जी आप कम निगेटिव होंगे, मैं बहुत ज्यादा निगेटिव था और आई पेड फॉर दैट, सो डोंट फाइट विद द मार्केट, फर्जी हो या सही हो, नहीं, मार्केट इज there are few ऑलवेज विनर। media channels who have reported that a lot of PSU companies have given false bull run. But sir, to be very honest, very frank with you, PFC RECs are very good PSU companies, well managed, and please do not look every PSU company with that lens. Yeah, I am not confirming any media reports or something, or any media story that is being covered in the media since last 2 days, but please let us have full trust in our government run companies. We have very good management there as well, so full respect to them. So let's not comment on at least REC and PFCs, because very good companies. Okay, moving on. Raj bhai, ये क्वेश्चन तो आपको लेना चाहिए मेरे ख्याल से. टाटा पावर, somebody has bought 240 call option at 19 rupees. क्या एक बार 240? Call option at 19 rupees in the money. It's टाटा पावर 250 रुपए पे आ गया था आज. नहीं, अभी भी 250 पर ही चल रहा है। 252 पे. ठीक है भाई, बट सर कभी भी इन द मनी आप क्यों खरीद रहे हैं, मुझे उसका कोई रीजन नहीं समझ में आता। हाँ ठीक है, एक तरीके से ये प्रोटेक्टिव पुट है कि नीचे जाएगा 240 के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर आएगा तो गेन ही गेन है। बट बिकॉज यू बॉट एट 19 रुपीज, सो आई एम प्रीटी श्योर द स्टॉक वाज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 260 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नाउ एट 252। I don't see still now that stock should move beyond 260. There has to be something from the result, at least for this settlement. हो गलत जाने का पूरा अधिकार है मुझे, अगेन आई एम जस्ट सेइंग द सेम, बट व्हाट माय व्यू इज दैट दैट इन द करंट सीरीज आई डोंट सी स्टॉक मूविंग बियॉन्ड 260, सो योर ऑप्शंस गेटिंग इन द मनी, देयर इज, आई वुड से, very less probability. So Okay. how to trade it, I don't know what to suggest. So, and one request to everybody: if you're buying such in the money options, better buy futures, नहीं because नहीं, ये चीज सही है ना, ऊपर जाएगा तो इनको फ्यूचर की तरह गेन मिलेगा, नीचे लिमिटेड डाउन साइड है। बट क्या है कि इन्होंने क्योंकि ऑप्शन बाई किया, इनका मार्जिन जो है लगातार अभी अगले हफ्ते से बढ़ने लगेगा इन द मनी का। तो सर के पास तो सिर्फ 2 दिन है, अदरवाइज मंडे ऑनवर्ड्स इनका मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। okay, दैट इज द ओनली नेगेटिव हियर। okay, okay, yeah, because 50% or 25%, यस 50%, 100% margin देना पड़ेगा उन्हें. That is the only thing. Okay, moving on. Next question is okay. Welcome, sir. Raj bhai views on IT stocks and Tech Mahindra. सर देखो, अगर मार्केट को पहले तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स का हूँ, शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ। तो आईटी स्टॉक्स में एटलीस्ट हैवी वेट्स दे आर नॉट लुकिंग एट कि हाँ उनमें कोई बहुत बड़ा रन आने वाला है या वो निकलने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी इन्फोसिस की क्लियरली, कि वो 1500 का जिस तरीके का कॉल बेस है वो नहीं निकलना चाहिए, वो नहीं निकला। सेम थिंग विद द टीसीएस, आई डोंट सी मच अपसाइड्स देयर। पर्टिकुलरली क्या है कि अब आज अगर इन स्टॉक्स में मूव है, तो अगेन जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक, इट इज मोर फ्रॉम द इंडेक्स मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। हाँ, ये टेक महिंद्रा पर से सर मतलब अब यहां पर तो मैं शॉर्ट नहीं बोल सकता, ना ही ये बोल सकता हूं कि अगर आपके पास है तो आप एग्जिट करें। अब तो सिर्फ आप थोड़े सा मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, मीडियम टर्म ट्रेडर बन के अपने पोजीशंस को रोल करें। आई एम प्रीटी श्योर यू हैवंट टेकन द पोजीशन इन ऑप्शंस, अदरवाइज आपके तो स्टॉप लॉस हो ही गए होते। बट अगर फ्यूचर्स में या कैश में है तो जस्ट होल्ड इट फॉर सम मोर टाइम। आई बिलीव दैट अनदर 1 क्वार्टर would be there for the entire IT pack where we will not see much of performance। देखिए आईटी अब तभी चलेगा जब एफआईज का बड़ा फ्लो इंडियन मार्केट में आएगा, तब सारे स्टॉक्स चलेंगे, क्योंकि वो उसी वेट के हिसाब से, अगर एचडीएफसी बैंक का निफ्टी में 15% वेट है तो, और 1000 करोड़ निफ्टी में आ रहा है मार्केट में, तो 150 करोड़ एचडीएफसी बैंक में जाएगा। तो जब वो फ्लो आएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल सी अक्रॉस द बोर्ड बाइंग। बट टिल दैट इज नॉट हैपनिंग, market is, or IT stocks are likely to lag। Okay.
your view on HAL, please. Deepika ma'am, HAL actually, trading wise, I think we have any view open on HAL? But because short-term views we have, but I think not in derivative, because we have it was a gladiator pick, which is itself a technical pick for 3 months, where there we were bullish. So that is our view. Tata, yeah, okay. Vinitha ma'am, Tata, I am not able to understand which company is it. 3400 call option Tata AI. Titan. I think can be Titan. Yeah. So, ma'am, please clarify on that, because I'm not able to figure out which stock it is. Okay. What happened if I could square off my call put off on expiry due to some, couldn't square off my call and put on expiry due to some reason? Okay, Raj bhai, interesting technical साजिद question. जी, अगर आपका ओटीएम है तो कोई फायदा नहीं है, वो अपने आप जीरो हो जाएगा, तो एक्सपायर आप सेटल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी जीरो। बट अगर इन द मनी है और आपके ब्रोकर, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ब्रोकर डू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशंस, बट अगर धोखे से आपका नहीं एक्सपायर होता है और आप नहीं करते हैं, so in that scenario you have to take the delivery. So for example, let's suppose I am talking about Voltas, and someone has bought 800 call, just for the sake of example, 800 का कॉल खरीद के रखा है, करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 840, एंड लेट्स सपोज आज ही एक्सपायरी और आज 840 पे एक्सपायर हो जाता है, देन यू हैव टू बाय वोल्टास entire 600 quantity in cash. You have to pay for that. Okay. Tata Com, okay, Tata Com nahi hai. I don't know which expiry it is. Okay, we will see that. राज भाई, मार्केट कुछ कर रहा नहीं है, व्यूअर्स भी अपने बोर हो रहे हैं, क्या करें वो? हम लोग थोड़ा सा टाइम चेंज करते हैं या फिर बैंक निफ्टी वाले दिन आते हैं। बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ होते रहता है। ठीक है, आई जस्ट सी हीरो जीरो कॉल बाय 19700 कॉल ऑप्शन एट 5 फॉर, अरे अनिरुद्ध सर, प्लीज, आई थिंक यू कैन फाइंड सम अदर स्पेस वेयर यू कैन पुट योर कॉल एंड पुट, प्लीज viewers, please do not follow this advice, because even we don't know whether he's a SEBI registered person or not, because giving calls randomly on any public forum is a crime, sir. Please be very careful with what you're doing. View on PNB. Mohammed Feroz is asking view on PNB. सर पीएनबी में कल काफी ज्यादा शॉर्ट आया है, एंड स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इनटू बैंक, तो आई वुड अवॉइड एज ऑफ नो। अगर मुझे इसको लेना है देन आई विल लुक एट कि एक बार ये 78 के ऊपर दोबारा से जाता है स्टॉक, देन ओनली आई विल कंसीडर बाइंग इट वंस अगेन। Otherwise, it is more of further it can go into continued consolidation or some more weakness. So any buying in PNB is only advisable beyond 78. Okay, moving on, Tata Com. Okay, we'll start before Tata Com. I'll just ask two things. Nifty 650 C, sir, we do not have view on C because our view is of downside, negative view. So वो उस पे कोई view नहीं है. Someone had sold it for 24, I guess 23, 24. हाँ चलेगा सर, मतलब अगेन आई एम नॉट, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द स्टॉप लॉस, एंड वी हैव सेड मतलब कि आई डोंट सी एक्सपायरी बियॉन्ड 650, सो मोस्ट प्रोबेबली दिस कॉल ऑप्शन विल बी जीरो, but you cannot be sure, and you have to put in a stop loss, and that stop loss has to be your choice, क्योंकि ऑलरेडी 150 पॉइंट्स चल चुका है, तो फ्रॉम एनी टेक्निकल पर्सपेक्टिव आई विल नॉट बी एबल टू गिव एन स्टॉप लॉस। Okay, yeah, makes sense. Havels was given in future with SL of 1355 and it's between holding cash at this level. Yeah, can we hold Havels in cash? Yes, we can hold Havels in cash. That is the message. Okay, Tata Com's view on 1780 call option 22, Rajbhai. He bought it 22, 1780 22 पे 31 पे चल रहा है मेरे ख्याल से. So today morning itself he has bought, but the day low is suggesting 2285. पहले लिया रहेगा, नहीं हो सकता. So sir, I think the pricing, please clarify on the pricing. 22 नहीं हो सकता. Okay.
ओके एक अगर है मतलब आई कैन नॉट सी दैट ऑन माय स्क्रीन सर बिकॉज टुडेज डे लो इज सजेस्टिंग 2285 एंड यू आर सेइंग हाँ अगर आपका आया है तो ये अच्छा है सर। ओवरऑल आईटी पैक में सर थोड़ा सा प्रेशर है, आज इंडेक्स मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू आर ऑलरेडी मेकिंग 50% हियर, सो बेटर टू बुक प्रॉफिट हियर। yeah yeah moving on, let's go with another question. Havels though we have covered, you can hold it in cash sir, now not an issue. 1960 भी ले सकते हैं क्या मंदार जोशी? Actually यार, many people have booked profit there, but I'll still ask Rajbhai because we are not asking people to overtrade. It is still near our recommended price of 17.8 to 18 rupees only. So someone who has already booked profit should not trade again. That is the हाँ बट अगर किसी को दोबारा खेलना है तो फिर देखा जा सकता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा मूव आ गया है हाँ मार्केट में। सर ये 18 रुपए का चल रहा है, आपको ये 16 रुपए के आसपास एक अपटिक आएगी, ये 16 रुपए का हो जाएगा, सो यू कैन लुक एट इट। yeah. एंड अगेन टारगेट विल रिमेन अराउंड 28 to 30, नॉट एक्सपेक्टिंग मच वीकनेस आल्सो, मार्केट में रिमेन इन द रेंज ऑफ 600 to 650। That has been the view since we started since the beginning, since 12 p.m. That has been our view that market will it won't be easy for the market to cross 650 on the upside and 600 on the downside, expecting a muted expiry between 600 and 650, and we are on the upper end of the our view. So we have given 19650 put option as a recommendation, which many people have also booked profits in. Okay, sir, have you given zero hero trade? No, 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 Bhavni, ma'am. The trades are not yet given. Zero hero trade usually we give at 2 o'clock when we join after our lunch session. So after like between 1 and 2 we take a break and we come back at 2 o'clock. So between 2 to 2:30 we'll give a zero hero trade. So that is the time when you can actually come back for a zero hero trade. So people who are waiting for zero hero trade, the time is between 2 to 2:30. That's when we'll see if we get a chance. That's there. कोफोर्ज हैव यू टेकन? राजभाई कोफोर्ज के ऊपर क्वेश्चन है, प्लीज गिव सजेशन ऑन कोफोर्ज। Sir, entire IT pack, I have said the same thing. Matlab, I'm not expecting much upside. There are few stocks which have moved up sharply, like LTI, but that was primarily because of the result. Coforge का भी result आया है, but the stock is not able to perform the way. So I don't know what he has done, but अगर किसी को fresh positivity के लिए खेलना है, तो एक बार 5200 के ऊपर closing देने दीजिए, तभी खेलिएगा. Till then, avoid. It could be more of a range bound market. ओके ठीक है, moving on. Tata okay, Polaris, I am having Polaris 500 shares. I have no idea, sir. This is not an FNO, so I won't be able to comment on it, so extremely sorry sir. Next is sir, Tata Motors, any more upside of Milind sir? Our researcher Mr. Pankaj Pandey recently last Friday has given a buy call here. He maintained a buy call. Actually, this has been we have given it at 6 to 600, and now holding a view of 810. So if you're holding it in cash, you can hold it for 810. That's the view from our research desk and from our particularly from our research head, Mr. Pankaj Pandey. So Tata Motors targets of 810 is a hold. So Raj sir, if someone wants to buy in cash, then which sector to focus on for short term? Fertilizer? Question mark. I would prefer consumer space, consumer discretionary. Okay. Stocks like Voltas, Okay. Havels, क्योंकि इन्होंने जो अभी recent weakness आई है ना, तो they had given a good entry opportunity. So when someone has talked about Voltas, I immediately said yes. तो थोड़ा सा relatively मुझे risk reward perspective से तो अच्छे लग रहे हैं। Yeah. Yes, Sandeep sir, I completely agree with you. Hero Zero is pure gamble. But what happens is like people still want to trade, and on expiry day, everybody wants to trade that. So that is the harsh reality of our of our times that we have to give that to just to. And obviously, it's a gamble because you are losing money, so it's like a lottery ticket. But yes, it won't be a blind gamble. It will be a proper researched thing. So yeah, zero hero basically I would term it as buying a very cheap option for a gain, because on expiry day your cheap options can become multi-baggers. So it's sort of that. But yes, we do not want to like don't want people to lose money heavily. So that's a different thing. We do not suggest very risky bets as well. Okay, Coal India view, sir. Raj bhai, Coal India.
अच्छा, कोल इंडिया 300 भी पहुंच गया गौरव हिम्मत के बाहर हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि देयर इज एनीथिंग वीक, हाँ, stock is fine, but can I buy it at CMP when I saw it at 220 and then 280? So will I be able to watch it at 315 or buy it at 315? I'm not sure. ओके So for me, I would just avoid this ओके stock. I'll not be able to give fresh recommendation. Uh, that's it. Stock isn't weak, that is for sure. ओके, so I think that would be perfect. Moving on, I'll take for okay, view on BHEL, BHEL. हेल बैन में आ गया था, तो आज ये बैन से खुला है, तो आई बिलीव कि वी शुड सी सम मूवमेंट हियर. We had given a bull call spread, and if you'll see, stock hasn't done anything. So towards the expiry, we might see momentum coming back in the stock, and it might move towards 134, 135 levels. So we are still holding our positive bias here. Okay, moving on, next one is, why is Reliance Industries down day by day? Because that's a very, very important question. Even I was asking Rajbhai today about Reliance Industries. He's like, "ये अब तुम ये सब questions मत पूछा करो." तो अच्छा सर सा आप इसको पूछे। दूसरी तरीके से देखो कि रिलायंस का करीब 10% वेट है निफ्टी में, एचडीएफसी बैंक का 15% वेट है, 25% जो है आपके लगातार गिर रहे हैं पिछले 2 महीने में, फिर भी आपका निफ्टी नहीं गिर रहा है. सो रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स हैव बीन एबल टू होल्ड द मार्केट, एंड व्हेन रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक दे performing, then we might see a good up move in the broader market. तो थोड़ा सा एज ऑफ नाउ कोई ट्रिगर नहीं है कि मैं मार्केट को देखूं कि हाँ भाई निकल जाएगा रिलायंस. बट अगर ये सपोर्ट के टर्म से बात करूं तो 2300 लेवल शुड बी हेल्ड अहेड ऑफ द रिजल्ट. तो 2300 का लेवल आई बिलीव रिलायंस को होल्ड करना चाहिए. और कवरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल प्ले इफ स्टॉक इज एबल टू सस्टेन बियॉन्ड 2350. पिछले एक हफ्ते से बहुत कोशिश की, बट इट वाजंट एबल टू सस्टेन. And short-term view on JSW Steel. Sir, stock is fairly good. Leverage-wise is also very light, so I will not uh, only concern against is but I would be buyer. I will not be seller in JSW Steel. It may remain range bound, but I don't see much weakness here. Okay, must have squared off. Sir, Karanbir sir, you did not book your profits. That's okay. Once, I think. Okay, okay, okay. JSW Steel, view on JSW Steel. I come back to that question. 1 second. हो गया आपने कॉल के लिए. Okay. Sir, any view on Adani Enterprise touch 2400 today? पिछले 3 महीने से कुछ भी नहीं किया. इट हैज बीन लार्जली रेंज बाउंड, फेयरली रेंज बाउंड. हाँ, बहुत सारे न्यूज फ्लोज हैं, बट आई विल स्टिल अवॉइड. वी नीड सम ट्रिगर. हमने एक बार इसको कवरिंग के लिए अटेम्प्ट किया था, बहुत टाइम के बाद मिली थी कवरिंग भी, बट अनटिल अनलेस स्टॉक जो है थोड़ा सा साइन नहीं दिखा रहा है कि ये कंसोलिडेशन रेंज से बाहर जा रहा है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू लुक इनटू इट फ्रॉम द बाइंग पर्सपेक्टिव. एज ऑफ नाउ देयर इजंट एनी ट्रिगर जो मैं डेटा में देख सकूं, या फिर क्योंकि बहुत ही हैवीली रिटर्न स्टॉक है. कॉल ऑप्शंस हर जगह के, हर स्ट्राइक के बहुत ही ज्यादा लिखे गए इसके, तो लोग भी अपसाइड ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. तो लेट्स सी, बट एज ऑफ नाउ देयर इजंट एनी ट्रिगर. Okay. Chambal we have covered, I think. Yes, yes. Chambal we have covered. Target for 19600 C, entry price 16, CMP 68.
So it's trading at somewhere close to, but it's trading at 71. या कॉल बेचो और क्या, कॉल कहाँ बेचा? मैंने कॉल बेचो नहीं, वो भी नहीं हो सकता। मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। Profit. You can book profit, sir, because our view is very clear कि we are not expecting upside. Right now it is above 660, Nifty now 6. Let's see if it sustains, but we are not very clear that Nifty will not see a close above 650. We can go wrong. We have already said that. So yeah, that's one thing from our end very clear. Okay, 9 is a target, not hit, but it's Anant sir. Actually, we set to book some profits, but if you have not booked your profit, please do not hold it beyond 10 rupees. It's a request to everybody that if 10 rupees is hit, please exit it. Please exit it. देखिए, व्यू रिमेन सेम। अगेन आई सेड द सेम थिंग कि अगर किसी ने कॉल बेचा होता तो ही हैज गॉट द मनी डिस्पाइट मार्केट हैज मूव्ड अप। उस वक्त कॉल ऑप्शन जो 29 रुपीज का था करंटली इज एट 22 रुपीज एंड द पुट ऑप्शन हैज डिक्लाइंड बाय 7 to 8 rupees. Yeah. So what is happening that your theta is coming into picture. We were against buying calls. It was more of a negative to range bound view. And what we could have done, we could have either buy put or we could have gone for the spreads. But एक बार ये 15 से या 17 से 22-25 तक गया एंड आई स्टिल बिलीव कि मार्केट 600 से 650 के रेंज में ही एक्सपायर होगा। तो ये व्यू है गौरव, और मैं इस व्यू के अगेंस्ट, मतलब एक टिक अप टिक आएगी मैं फिर व्यू चेंज करूं, नीचे आएगी नहीं फिर वो मैं तो नहीं है. It is very clear that we are here that we are of the view that this will not go beyond, like our view is 650 के नीचे expiry होनी चाहिए. If our view goes wrong, we will not change that view. We'll take the stop loss and we'll accept it that we have gone wrong. But going long here doesn't make sense because market has already done its major movement for the day. Went down till 512. अभी जस्ट जो डेटा में डेवलपमेंट हुआ है, अगर मैं उस चीज पे जाऊं तो 650 पुट में अच्छी खासी राइटिंग हो गई है, 2 करोड़ शेयर आ गए वहां पर। 600 के पुट में तो ऑलरेडी 4.5 करोड़ शेयर हैं, तो दैट इज फॉर श्योर कि 600 के नीचे शायद हम लोग ना जाएं। अब बहुत ही एग्रेसिव राइटिंग हुई है यहाँ पर, बट 650 के कॉल में भी राइटिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली 650 के आसपास हम लोग एक्सपायर करते हैं। अगर इन पुट्स को एक बार के लिए झटका देना है मार्केट को तो इट माइट मूव टुवर्ड्स 600, बट अगेन देखिए 600 का पुट 4 रुपए का है तो वो उसके नीचे भी नहीं जा रहा। 700 के कॉल में भी आपके करीब आपके 3.5 करोड़ शेयर हो गए हैं, तो होना 600 से 700 के बीच में। हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड इट, दैट डिपेंड्स कि मार्केट जो है 650 के आसपास है, बट अगर हमें यहाँ पर पुट में थोड़ा सा क्लोजर मिलता है देन परहैप्स वी माइट बी मूविंग टुवर्ड्स 620 610 सॉर्ट ऑफ लेवल, और उसमें ही पैसा बन सकता है। Okay, sorry, viewers, we have Dinesh sir as well with us. Actually, Dinesh sir, welcome. Actually, my speaker is off because me and Rajbhai are sitting next to each other. So, if I just hello everyone. Yeah, so that is why that is why I could not ask you any questions. One second, sir. Yeah, Dinesh sir, are you there? Yeah, I'm there. Shoot. Yeah. So yeah, थोड़ा गड़बड़ हो गया हमारे end से. Yeah, sir. So yeah, sir. Your view on Nifty, we'll take your view as well. Hopefully, you and Rajbhai are on the same page. If not, then that also let us know about that as well. Yeah. So my view is जिस तरीके का आज नीचे से bounce आया है ना, this is a very sharp bounce coming from a solid support and a extremely oversold zone, particularly in Bank Nifty. उसका जो bounce आया, it is much better, much sharper, and if you know any bull market or any trending market requires the support of Bank Nifty. Our Bank Nifty is today, after a very long time, giving us that signal. So my view is that, as long as the spot Nifty is going to sustain above 620, 610, okay, 620, 610, very likely that today we will test 19,700 once during the day. D sir, can you share your screen? Yeah. I think today for the first time I'm seeing you and Rajbhai on different sites.
Yeah, you can see my screen. Yes, yes, I can. Yeah. So ये जो लेवल है 620 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये जब तक ये है, ओके, जब तक ये लेवल 620 600 है, तो दिस इज गॉट अ गुड पॉसिबिलिटी दैट we might go all the way here, 695 to 710, which was the previous level where Nifty was trying to hold for a long time, where it cracked, to retest that once today. Because एक बड़ा candle pull back, दो बड़े candle sideways, now again attempting some similar stuff happening, and the leader of that reason today is Bank Nifty, which is trying its best. So if I show you Bank Nifty, see, huge green candle, now doing a kind of a pullback in this zone. And, as long as it stays above 43,800, this will also now try to push its way up towards 44,000, 44,100, like that from here. जो जिस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है और सेटअप बन रहा है उसमें, इस तरीके से मेरे को वो लग रहा है. बिकॉज इफ यू लुक एट द बैंक निफ्टी, आई एम गोइंग टू गो टू द वीकली थिंग, व्हाई आई सेड एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी कॉल मेजर सपोर्ट लेवल है 43,500 यहाँ पर. तो 43,500 इज like a kind of a, you can call it we might get a dead cat bounce, or we'll get a reversal, whatever you want to call it. It's a level which I want to respect very, very seriously at this current juncture out here. Yeah. So my reading is that from the current point of view. Okay, I was on mute. I'm so sorry. Yeah, Rajbhai is taking a loo break, so he'll be back in 2 to 5 minutes. I'll take some questions, sir. I'll need your help with the charts. Yeah, sure. Okay. Thank you, Rajbhai. Thank you. Okay. Thank you, Milind, sir. It's always a pleasure helping everybody. So Cofor's 5100 call option. Okay. What price you can buy, sir? Manoj, sir, I think stocks we cannot give because we need prior compliance approval on giving any new recommendation in stocks. So we'll skip that. 1960 before we go into Coforge above 5175 5200 gets much more stronger. There is a divergence formation in Coforge. Okay. Yes, so yeah, so इसका higher time frame में very good, as it is, it's bounced from a very good support of 5,000. Now above 5175, there can be a lot more traction. This will not be then a one-off case. So ideally, one should, if you can wait for this 5175, so you get more traction. The option premium will start giving you a better yield accordingly. Otherwise, this 5,000 level, देखो एक बार दो बार टेस्ट करके भागा है, तो जब तक ये 5,050 है या any dip till there gives you that opportunity. Absolutely. Yeah. Moving on, sir, with next, can I sell 19700 and 196CP? 700 600? No, sir. I would not. Call बेचना है 19700 का आपको. Sir, call बेचना है 196 में, put बेचना है. No, Prakash sir. What will happen is that 7 रुपए के चक्कर में आप 70 रुपए का लॉस भी खा सकते हो. मतलब it is safe, but it is dumb money basically. Why do you want to risk out? No, don't do that. Don't do that, Gaurav, because of once एक तो you are very correct कि इतना low premium बेच के कोई मतलब नहीं. And we saw that this week in Fin Nifty last week, and something happened in bank, so Sensex, BSE banking also similar on Monday. Yeah. और कल 44,000 पुट में भी हुआ वो सेम सिनेरियो. तो डोंट डू दैट इतना छोटा प्रीमियम का करने का. एक तो वो कारण, दूसरा आज कैंडल्स ग्रीन बन रहे हैं ना, आपके अपसाइड सर्ज हो रहा है. तो व्हाई डू यू वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ doing something like that? Absolutely. Mayappan sir, going for a long straddle at 43,900 strike.
Right now, Bank Nifty expiries on next Thursday, sir. Remember that Bank Nifty monthly expiries are on Thursdays, not on Wednesdays. So coming week we'll have the monthly expiry, and doing long or short straddles so early will have a big impact, sir. So right now, I think so that call should not be taken. I think I'll leave it to the experts, Rajbhai and Dinesh, sir. So Rajbhai, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं सर, मतलब बैंक निफ्टी ने पिछली बार जो लो मारा था वही 43,800 के आसपास मारा था। रिसेंटली आल्सो आज भी अगर जो आप देखोगे लो है तो ठीक है, उसके नीचे आया बट इमीडिएटली वी मूव्ड अप। तो व्हाट आर द चांसेस दैट वी विल मूव आउट ऑफ द रेंज एंड give a desired 3 to 4% sort of move in bank nifty, because then only you'll be able to make money। तो अभी इस तरह की वोलाटिलिटी, मतलब आप 11 के कम की वोलाटिलिटी पे चल रहे हो तो मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग कोई बहुत बड़ा मूव होगा, नीदर हायर साइड और डाउन साइड। और उसमें लॉन्ग स्ट्रेडल करना सेंस नहीं बनाता सर। Absolutely, sir. On today's first 26:10 call. Okay, call which up. Samir sir, again, I think again you have done the ulta triangle. और Last, 26 अक्टूबर का इन्होंने yeah, अगले हफ्ते का किया है। yeah. Samir sir, I think we had, I think last time also you were the one who had did the reverse one. Please avoid it, sir. You will not make money. मतलब. सर देखिए आपने क्या किया है, आपने 19,400 और आई एम नॉट श्योर कि आपने यू हैव डन इट साइमल्टेनियसली। आपने शायद अपना टाइम भी आपने अलग अलग रखा है। तो अगर आपने टाइम अलग रखा है, फिर आपने एक डायरेक्शनल कॉल ली है यहाँ पर। और मैं आपको जो आप थीटा खाएंगे वो क्या खाएंगे कि जो आपको 400 से ज्यादा, अगर आपको 410 रुपए का प्रीमियम मिला है तो वो जो 10 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम है आप खा लोगे उसे। और ये जो चीज है, बनेगा पैसा आपका, बट वो 10 रुपए ही बनेगा। तो 400 का कॉल बेचा है, 800 का पुट बेचा है, एट द एंड ऑफ द डे आपने 400 से ज्यादा जो भी कमाया है, Yeah, वो आपका पैसा है। yeah. वो पैसा आपको कल या परसों में नहीं मिलेगा, वो आपको 26 अक्टूबर को ही मिलेगा, नॉट बिफोर दैट सर। Okay, I think you're with us. I think कुछ action नहीं है market में. We come back at 2. Come back at 2. Sumit, are you there? Yes. Yes, Sorry. yeah, there are Yes, Gaurav. Yes, I'm there. yeah, Yes, I'm yeah. there. Yeah, so there's some few product related queries. So I'll just introduce you. So viewers, this is Sumit. Sumit comes from the equity product group EPG from our in ICICI Securities. So anything and everything product related, Sumit is the master. Sumit, over to you. You can take the session till 2 o'clock. We'll be back after a lunch break. So viewers, see you guys by 2 with few more trades for the last session of today's expiry. Perfect. Yeah. Thanks very much, Gaurav. So, so today I will cover, as usual, most of the products that we have made available on our website for FNO traders. So I'll go through some of the products as per the time that allows me. But at the same time, I would like to also cover couple of issues that customer normally ask, that उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, but then they try to, you know uh, basically what I understand from them is that there is a bit of lack of understanding, especially with respect to stop loss and target profit for the products that we have launched. So first of all, I will try to cover that right in the beginning of the session, and then of course you can post your queries on the YouTube platform. जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, I will go through that, and I'll try to cover as much as I can. So yeah. So first of all, just give me a second and I'll try to share my screen. Um, so okay, fine. Uh, so I can see there is a question. Sumit ji, namaste. Thank you. Namaste, sir. Did ICICI Direct create the ticker for put call ratio? सर अभी तक तो नहीं अवेलेबल है, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड सून वी विल बी एबल टू कम एंड गिव यू, बट it's very simple and very easy to calculate it yourself. I mean ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, आपको सिर्फ
आपको सिर्फ अपना जो ऑप्शन चेन होता है, ऑप्शन चेन का एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का जो ओपन इंटरेस्ट होगा, आपको उसको कंप्यूट करना है, आपको उसको सम करना है ऑन द कॉल साइड, एंड एट द सेम ऑन द पुट साइड का जो आपका स्ट्रेटेजी बिल्डर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जो OI होता है ओपन इंटरेस्ट, ये आपको ऐड करना है, और सेम चीज आपको यहाँ पर पुट साइड में भी आपको ऐड करना है। आप इन दोनों को कंप्यूट करो और पुट विद रिस्पेक्ट टू कॉल आप इसका रेशियो निकाल लो सर, आपको उसका PCR मिल जाएगा। तो it is not very difficult to compute, but as far as putting this, the reason we are not able to explicitly come up here, because this goes along with some other the tools that are available, that we are going to make available, तो वो उसके साथ आने वाला है। तो हो क्या रहा है कि छोटे से चीज के लिए वो मतलब बाकी बड़ी चीज की वजह से छोटा चीज अटक रहा है। सो आई विल ट्राई टू कवर दैट, एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट ये जल्दी से जल्दी मैं लेके आ जाऊँ। आई विल ट्राई टू ब्रिंग दिस ओवर हियर ऑन दिस पर्टिकुलर हियर एज वेल, बट देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट एज वेल। अगर आपके पास कोई ओपन पोजीशन अवेलेबल है ऑलरेडी सर, तो आप ओपन पोजीशन पे जाइए, और ओपन पोजीशन पे सर ये हम लोग का आई ट्रैक करके एक चीज होती है। तो अगर आप ये इस पे ये ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर, ये अगर एक ग्राफ पे अगर आप क्लिक करोगे सर, तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी के निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, 1.15 का पुट कॉल रेशियो चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। So that is one way, but if you don't have any position, then I highly doubt that you'll be able to see it. Then the only way to look at it is आपको compute करना पड़ेगा। Soon we will make it available. So coming back to the point, um, coming back to the point regarding the people having queries regarding stop losses. तो जो नया feature that we have brought here in place order, you just have to click on FNO place order options की बात अभी हम लोग की चल रही है, तो I'll go through the options। तो यहाँ पे ना let's say for example निफ्टी 19 अभी क्या चल रहा है, 19,600 to 19, let's say 600 की बात करते हैं हम लोग का कॉल। Sorry, there was a noise. Okay. So 19,600 के कॉल की बात करते हैं, 51 रुपये चल रहा है, 51 रुपीज़ के अराउंड। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे बाय करना है। दिस इज जस्ट प्योरली एन एग्जांपल जस्ट टू शो हाउ टू यूज GTT ऑर्डर्स, और उसके रिलेटेड जो क्वेरी आई है आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस दैट। तो क्वांटिटी लेट्स से 50 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है, और ये वाह 51 का प्राइस था, 47 इमीडिएटली हो गया। सो लेट्स से मार्केट पे ही मैं लिमिट पे करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50। अगर मैं 50 पे करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको पहले तो टॉगल बटन ऑन करना होगा। आपका स्टॉप लॉस लेट्स से 40 का है, यहाँ पे आप किधर तो क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 20% का आपने बेसिकली स्टॉप लॉस रखा हुआ है विद द लिमिट प्राइस ऑफ 40। ट्रिगर प्राइस आपका सॉरी अभी प्राइस चल रहा है 51। आई वुड लाइक टू कीप इट वेरी 40 रखता हूँ मैं, जिससे कि मैं आपको लाइव डेमो भी दे सकूँ। लेट्स से 30 का मेरा स्टॉप लॉस है, एंड मेरा टारगेट प्राइस इज लेट्स से 60। तो अगर ये 40 रुपये आता है तो एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वैसे ही मेरा स्टॉप लॉस 30 रुपये का लग जाएगा, एंड 60 रुपीज़ का मेरा टारगेट प्राइस लग जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके अगेंस्ट में ये एक लिमिट प्राइस दिया हुआ है। मैनी ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज कि लिमिट प्राइस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस एंड टारगेट ट्रिगर प्राइस, दिस इज नथिंग बट जस्ट अ ट्रिगर प्राइस, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज द थिंग, जब आपका प्राइस एग्जीक्यूट होने के बाद अगर ये प्राइस पॉइंट हिट होता है, यानी कि 30 रुपया हिट होता है, तब आपका लिमिट प्राइस पे ऑर्डर विल बी प्लेस्ड टू द एक्सचेंज एट वॉट 30 रुपीज। बट ये 30 रुपीज नहीं रखना है, यू हैव टू कीप इट, बिकॉज मैं बाय कर रहा हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सेल ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर पे आप कभी भी देखोगे, अगर मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ आपको बिड प्राइस एंड ऑफर प्राइस, तो जब आप सेल करने जाते हो तो इट ऑलवेज ट्राई टू टच द बिड प्राइस। तो इसीलिए whenever you try to place the sell order ना, always try to put it below the bid price।
जो भी बिड प्राइस होगा। तो यहाँ पे बिड प्राइस अभी हम लोग के केस में क्या होने वाला है, 30 रुपया होने वाला है बिड प्राइस। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, ठीक है। तो 30 रुपए के नीचे वाला प्राइस शुड बी माई लिमिट प्राइस। तो 30 के जगह पे आई विल पुट लेट्स से 28। मैंने 2 रुपया दूर रखा हुआ है। आई विल टेल यू व्हाई। सिमिलरली 60 है, मैं इसको 55 कर देता हूँ या फिर 58 कर देता हूँ। Now even this is really very tight with respect to stop loss and target price. I will come back to that why. मैं इसको प्लेस ऑर्डर पे जाता हूँ एंड प्लेस करने को देखूंगा। एट द मोमेंट द प्राइस इज 50 रुपीज़, ठीक है। और मेरा यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस 30 रुपीज़ का रखा है एंड टारगेट मेरा 60 का है एंड लिमिट प्राइस मैंने 40 का रखा हुआ है। तो लेट्स से आई प्रोसीड विद दिस। ओके, मेरे पास फंड, मेरा पोजीशंस ऑलरेडी खड़े हैं एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबली इट इज नॉट अलाउइंग मी टू पुट दैट। लेट्स गो विद द स्मॉलर वन। इसके जगह पे आई विल गो विद 700। लेट्स से 700 इज टू टाइट। 650, 11 रुपया, दिस मेक सेंस। इतना तो फंड होना चाहिए। 11 रुपये पे स्टॉप लॉस मेरा समझो, ये मैंने, सॉरी माय मिस्टेक, इसको मैं 8 रुपया कर देता हूँ जो कि टच हो जाएगा। 6 रुपया कर देता हूँ जो कि टच नहीं होगा। स्टॉप लॉस मेरा 2 रुपये, 2 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। टारगेट मेरा 20 रुपीज़ का रखा हूँ। लेट्स से जस्ट लाइक दैट। आई मीन बहुत लोग करना चाहते होंगे 8 रुपया 6 रुपया ले, 6 रुपया भी आने को टच हुआ, पर ठीक है। एनीवे तो लिमिट प्राइस मेरा 2 रुपया है, तो इसको मैं 1.5 कर देता हूँ एंड मेरा ये 20 रुपीज़ का है, तो इसको मैं 18 रुपीज़ कर देता हूँ लिमिट प्राइस एंड देन आई ट्राई टू प्लेस ऑर्डर। प्रोसीड। मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया सक्सेसफुली। मैं जीटीडी बुक में जाऊँगा, जीटीडी बुक में जाके मैं देखूंगा तो ये वाला ऑर्डर मैंने प्लेस किया हुआ है, ठीक है। एलटीपी मेरा 8 रुपया चल रहा है। इसका ऑर्डर बुक में अगर आप जाके देखोगे तो ऑर्डर बुक में आपको दिखा देगा कि आपका 6 रुपये का लिमिट प्राइस आपने सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको मॉडिफाई करना है 6 रुपया का समथिंग कुछ करना है, लेट्स से आई डू दिस टू 5 रुपीज़, मॉडिफाई, प्रोसीड। 5 रुपये का मॉडिफिकेशन मैंने 6 रुपये से 5 रुपया कर दिया उसको, नो प्रॉब्लम। जीटीडी बुक में जाऊंगा तो जीटीडी बुक में यू विल बी एबल टू सी कि लिमिट प्राइस आपने जो ट्रिगर प्राइस जो आपने लिमिट प्राइस रखा है, दैट यू विल बी एबल टू सी। आपका ट्रिगर प्राइस 2 रुपये का है, 20 रुपये का ट्रिगर प्राइस है एंड 1.5 एंड 18 रुपीज़ इज व्हाट योर लिमिट प्राइस इज। Now coming back to the main question from the customers, बोलते हैं वो लोग कि उनका ट्रिगर प्राइस या लिमिट प्राइस जो भी प्राइस अचीव हुआ बट वो हिट नहीं हुआ, व्हाई? तो इसका रीजन ये है कि इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मोस्टली आई हैव सीन कंप्लेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स कि बैंक निफ्टी में ये बहुत बार होता है कि हिट नहीं होता है। इसको मैं जरा कैंसिल कर देता हूँ, एक सेकंड। मैं ऑर्डर बुक में कैंसिल, ऑर्डर बुक को जाके इसको अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरा एवरीथिंग विल गेट कैंसिल्ड, ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मेरा हिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज क्या होता है कि मार्केट में जब हैवी मूवमेंट आता है, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस होता है। जैसे मैंने मेरे केस में रखा था यहाँ पे ये 1.5 रुपीज़ का रखा था। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें देख लेता हूँ, 45 था तो 45 का 44 रखा था, 75 का 74 रखा था। दिस वाज रियली वेरी टाइट। आपको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्राइसेस कुड जंप बाय 3 4 5 7 रुपीज़ जस्ट लाइक दैट। अब जब वो 3 5 7 4 रुपीज़ अगर वो जंप करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट नॉट ट्रिगर दिस पर्टिकुलर नंबर। वो स्किप कर देता है, उसको सीधा जंप कर जाता है उस पर। तो क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो आपका एक्सचेंज में सिस्टम में ऐसे ही पड़ा रहता है, वो ट्रिगर नहीं होता है, ठीक है। और कभी कभार आपका अगर ट्रिगर प्राइस हुआ और लिमिट प्राइस आपने सेट करके रखा है और लिमिट प्राइस जो एक्सचेंज में जाना चाहिए वो पहुंचता नहीं है एक्सचेंज की तरफ, तभी भी आपका क्योंकि प्राइस ने इतना जल्दी जंप मारा है कि उसको पता ही नहीं चल पाया कि देयर वाज अ नंबर ओवर देयर, तो वो एक्सचेंज तक पहुंचता ही नहीं है। तो इसकी वजह से वो इट गेट स्टक इन द सिस्टम इटसेल्फ। तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और टारगेट भी हिट होने का चांसेस नहीं हो जाता है। आई मीन इट अप्लाइज फॉर बोथ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दिस इज लाइक द क्वेश्चन आई गेट ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जिससे कि मेरा टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस हिट हो। तो ये जो डिफरेंस है 45 का, जो मेरा ट्रिगर प्राइस है और जो मेरा लिमिट प्राइस है, ये थोड़ा दूर होना चाहिए आपका। यानी कि 45 है तो लेट्स कीप इट 40, 75 है तो लेट्स कीप इट 70। 5 रुपए का डिफरेंस के हिसाब से आप रख दो। तो इससे क्या होगा, मैं आपको ये समझाना था। तो इससे क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल निफ्टी, हम लोग 650 का ही कॉल देख रहे थे, 700 का देख लेते हैं, 600 का देख लेते हैं। 37 हो गया प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सेल करने चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल क्लिक करता हूँ, तो ये सेल होगा एट 37 रुपीज। बट मेरा लिमिट प्राइस अगर मैं 30 रुपीज रख के सेल करता हूँ, तो इट विल ट्राई टू हिट द बेस्ट। यहाँ पे 36.9 भी दिख रहा है आपको, 30 उसके नीचे और भी होंगे, 20 डेप्थ तक जाता है, 36, 35, 34, 33, 32, 31। तो जो भी आपको मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका फिल जरूर होगा। फिल ऑर्डर फिल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है उससे। बट अगर मैं यहाँ पर एकदम ही टाइट रखूंगा, तो होता क्या है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये प्राइस इन केस अगर ये सडन मूवमेंट आया और प्राइस जंप हो गया, तो वो आपका हिट होने का चांसेस, थोड़ा स्किप होने का चांसेस उसमें बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा एक ही रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर जब आप ये लिमिट प्राइस आप डालो, तो ट्रिगर प्राइस तो चलो ठीक है, ट्रिगर प्राइस आपका हिट होगा। ट्रिगर प्राइस भी कभी कभार जंप हो सकता है, बिकॉज वो उसको दिखता नहीं है सिस्टम को, बिकॉज द प्राइस एक्चुअली सडनली ड्रॉप फ्रॉम 50 टू 40, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या 47 से इट सडनली ड्रॉप टू 41। तो वो मिस हो गया बीच का नंबर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कम्प्लीटली स्किप हो जाए। तो इसलिए इन केस अगर ये ट्रिगर प्राइस आपका हिट हो जाता है तो लिमिट प्राइस नहीं हिट होता है, तो इसके लिए दिस नीड्स टू बी वेरी far away from the trigger price। तो ये एक चीज मुझे आप लोगों को बताना था for lots of audience and the people who doesn't have clarity about the concept of how it works। तो इस चीज से आपका थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक योर स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट वर्क सक्सेसफुली इन दैट केस। So that's how it works in case of GTT। So that was the thing। Sensex options, ICICI Direct में the team is actually working on it. Soon it will be made available। I know I've been saying this from quite a time now, sir, we are actually working on that and it will be made available soon। Yeah। तो उसके बाद last time some queries I wasn't able to cover regarding the strategies। I think somebody was asking कि basket order कैसे set करते हैं, तो let me just cover that। Basket order में all you need to do is just click on basket order। There are two ways you can create your basket in options, either through quick start strategies। Quick start में this is nothing but a ready-made strategies that are made available एंड यूजिंग स्ट्रैटेजी बिल्डर। तो पहले हम लोग क्विक स्टार्ट को देख लेते हैं। क्विक स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ऑल दी स्ट्रैटेजीज, रेडीमेड स्ट्रैटेजीज विल बी मेड अवेलेबल टू यू। अब जैसे आज का दिन तो काफ़ी लाइक 629, अभी थोड़ा और नीचे आ गया मार्केट निफ्टी का, इट वाज अराउंड 650। तो व्हेन आई स्टार्टेड तो 630 पे आ गया है। तो लेट्स से मार्केट इज गोइंग डाउन, तो बेयर कॉल स्प्रेड हम लोग करते हैं। तो बेयर कॉल स्प्रेड में अगर आप लोगे तो 19 इधर, दिस इज नथिंग बट अ रिकमेंडेशन गिवन टू यू। 19600 का कॉल है 42 पे, 19650 का कॉल यू नीड टू बाय एट 7 रुपीज। अगर ये करोगे आप तो आपको यहाँ पे 23-24 हज़ार रुपए का आपको मार्जिन चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक अ पोजीशन हियर। निफ्टी स्पॉट प्राइस ये आप देख सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन डन। लेट्स से बेयर कॉल आपको क्लिक किया, आपने प्रोसीड किया, आपका the order will go through in that case। My screen got disconnected, just sorry for that। I hope it is now visible। um, so yes, so that's how the basket order thing works। um,
Just looking at the questions in the chat box. Sumit ji, I click to gain an I click FNO subscription using Breeze API not working while it works for individual stocks. Any suggestions? Um, you will have to put that question into the Breeze API को आप direct कीजिए, and I believe it should work. But अगर नहीं काम कर रहा है तो please report it to the Breeze का एक जो ये है Breeze API at ICICIsecurities.com. सर उधर लिख दीजिए exact with exact issue and exact screenshots. Then yes, we will be able to take that up very quickly. Breeze API very slow today. It's taking 5 to 10 seconds to place order. Sir, again, uh, all I can say is that you need to post your request here in the Breeze API, and we will get back to you. There may be a couple of issues, but yeah, sir. Breeze के लिए definitely I will bring somebody next time. While you know, so yeah. So 19650 का टारगेट हिट हो गया है. ओके फाइन. Flash trade, is it not possible to carry forward next day? Sir, it is possible to carry forward next day. Sir, there are two ways to do it. मैं अभी दिखा देता हूँ आपको. फ्लैश पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप ये जो सेटिंग्स बटन है, ये सेटिंग्स बटन पे अगर आप नॉर्मल में ट्रेड कर रहे हो तो ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन टिल एक्सपायरी. So whatever positions you take will be carry forward till expiry. अब for example ये तो 19 का है, just forget about it. Let's say मैं 19 अक्टूबर की जगह पे मैं नेक्स्ट एक्सपायरी लेना चाहता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी इज ऑन 26 ऑफ अक्टूबर. तो 26 अक्टूबर 1917 का ही है, मैंने टिल एक्सपायरी कर दिया है. तो यहाँ पे 26 अक्टूबर का चार्ट आ गया मेरे पास. And when I trade this, and if you leave it just like that, this will be carry forward till expiry. मतलब आप expiry तक लेके जा सकते हो. And if you want to square off after 10 minutes or maybe just tomorrow or on Monday or something like that, you will be able to do that. So not a problem. Intraday में you won't be able to do that. Normal में suppose you forgot to click on till expiry, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप ना लेट्स से 350 मिनट्स मैंने डाल दिया. अभी कितना बजा है? अभी 1:30 बजा हुआ है. इसका मतलब ये हो गया कि अभी मेरे पास 2 घंटे और बचे हुए हैं मार्केट की क्लोजर में. तो 2 घंटे का मतलब हो गया रफली अराउंड 120 मिनट्स, राइट. तो एनीथिंग बियॉन्ड 120 मिनट्स, लेट्स से मैंने 150 मिनट्स डाल दिया यहाँ पर और मैंने ये पोजीशन ले लिया. तो अब आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं. आप या तो आज का आज ही स्क्वायर ऑफ करके चली जाइए. अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं भी करते हो तो दिस पोजीशन विल बिकम कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली, एंड कल आपको ये पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगी. सो यस, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी फॉरवर्ड द पोजीशन. सर सुपर कॉल टारगेट हिट, थैंक यू वेरी मच. क्या बोलते हैं हम लोग की राज भाई का जो प्रेडिक्शन था, and it is fruitful to you. Thank you very much for your converts. Scalping strategy has some flaw when market moves in your opposite direction. It doesn't book the losses to minimize risk. Sir, it's not a flaw. It's kind of a strategy, and it has advantages and disadvantages of its own. तो मैं उसको उस चीज़ को समझा देता हूँ एक्जैक्टली क्या है वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में. सर आप जैसे स्कैल्पिंग में आओगे तो यहाँ पर सर आपका दो ऑप्शंस हैं. यहाँ पर वन साइडेड, अगर आप इसको वन साइडेड क्लिक करते हो तो क्या होता है, एज आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज, कि मार्केट आपका ऐसा ऐसे 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 जाता है और एक बार वो ऊपर टच घूमता है रहता है, उसके बाद इट ट्राइज टू कम डाउन अगेन, समथिंग लाइक दिस. तो क्या होता है स्कैल्पिंग में सर, अगर आप बाइंग से शुरुआत कर रहे हो तो यू ट्राई टू बाय हियर विद एन एग्जिट पॉइंट समवेयर हियर. समझो आपने 3 पॉइंट का एग्जिट रखा है और आपने यहाँ पे शुरुआत की है जैसे ही, और 2 रुपए का आपने बाइंग रखा हुआ है नीचे की तरफ. तो जैसे यहाँ से एग्जिट होगा
नीचे की तरफ 2 रुपये आएगा तो फिर से यहाँ पर बाय हो जाएगा, और ये जैसे ही 3 रुपये और ऊपर चलता है तो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। तो ये साइकिल जो है आपका वन साइड में प्रॉपरली चलते रहता है यहाँ तक, मतलब आपने बाइंग किया, सेलिंग किया, बाइंग किया, सेलिंग किया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिर्फ वन साइडेड रखा है तो इट विल ओनली डू बाइंग एंड सेलिंग, इट वोंट डू एनी नेकेड सेलिंग। बट फॉर द पीपल हु डजंट टेक दिस थिंग, उनके लिए एक अलग ही एडवांटेज हो जाता है। व्हाट इज दैट एडवांटेज? एडवांटेज ये है कि सपोज आपने 200 क्वांटिटीज या 500 क्वांटिटीज आपने बाय 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 करने के लिए रखा था, एंड इट ऑल बॉट 500 क्वांटिटीज, या फिर उस आपके पास आपने जो भी सेल करना था 500 क्वांटिटी आपने बाय की थी, एंड 500 क्वांटिटी ऑल गॉट एग्जॉस्टेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर और चलते जा रहा है, तो जिन लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया है उन लोग के लिए क्या होगा, इस पॉइंट से 3 रुपया ऊपर इट विल ट्राई टू सेल, वो नेकेड सेल उसका खड़ा हो गया। अगेन थोड़ा मार्केट ऊपर चला गया, अगेन उसका एक और सेल खड़ा हो गया, और थोड़ा मार्केट ऊपर चला गया, अगेन उसका सेल खड़ा हो गया। अब आपको भी मालूम है कि मार्केट वन सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाता है, स्पेशली ऑन लेट मी प्ले इट। यहाँ पे आप कंफर्म करोगे, यहाँ पे एक पोजीशन लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड, एंड देन यू विल बी एबल टू री एंटर द ट्रेड बाय एडिंग मोर कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जिट करना है, यू कैन एग्जिट इट एंड देन यू कैन री एंटर एज वेल, आई मीन यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे अगर आपने 200 क्वांटिटी ली है, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो ऑफ कोर्स इट विल थ्रो एन एरर, अदरवाइज अगर फंड है तो इट विल, यू विल बी एबल टू कीप एडिंग 200 क्वांटिटीज के हिसाब से यू विल बी एबल टू पुट इट। टाइम रिमेनिंग यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपका क्या है। दिस इज क्वाइट एन ओल्ड वीडियो बट इट वर्क्स इन अ सिमिलर फैशन। इस जीटीटी ऑर्डर ओनली फॉर बाय एंड नॉट फॉर सेल? नहीं सर, दोनों की दोनों साइड के लिए है। सेल भी कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। आई होप सर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये एक बार दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे, यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी अ बाय का लाइन। आई डोंट थिंक सो आई हैव अ स्टॉप लॉस अवेलेबल हियर, सो लेट मी जस्ट क्विकली शो विद स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस का वीडियो ये रहा। ओके, तो यहाँ पे इफ़ यू गो वेरी क्विकली, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कीजिए, सेव कीजिए कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके। जैसे ही आपने पोजीशन लिया उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपका बाय का पोजीशन, और स्टॉप लॉस का भी पोजीशन आपको दिख जाएगा। व्हेन यू री एंटर अगेन, आपने जो भी स्टॉप लॉस रखा होगा इट विल यूज द सेम स्टॉप लॉस अगेन, राइट। मार्केट में यहाँ पे अगर मैंने 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, एंड इफ यू री एंटर दैट 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ही लगेगा उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये पे पहला ऑर्डर लिया, नेक्स्ट यू आर टेकिंग एट 95 या फिर 90 रुपीज़ पे, तो आपका स्टॉप लॉस 85 पे लग जाएगा, फिर रफली अराउंड दैट नंबर ट्रिगर प्राइस आपकी लग जाएगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। So yes, you can re-enter on that particular one. Somebody was asking कि इसमें sell कर सकते हैं क्या नहीं GTT में? Yes sir, you can do sell in GTT. Let me just show it. You know, place order again 650 लेते हैं, 16 का है। मैं sell पे क्लिक करूँगा, quantity order type, let's say I want to sell it at 25. मैं एक सेकेंड के लिए ज़रा, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग ओपन पोजीशन है मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, सो दैट आई विल बी एबल टू शो यू इन अ लाइव। कुछ ऑर्डर्स डाल के रखे होंगे सेल के, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट डूइंग कैंसिल। यस यस, अब मैं दिखा सकता हूँ आपको। प्लेस ऑर्डर पे जाइए, निफ्टी 650 का है, 15 रुपया चल रहा है, सेल है। मुझे एक क्वांटिटी सेल करनी है, यहाँ पे मैं 25 रुपीज़ डाल देता हूँ, सेल। मेरा स्टॉप लॉस मैंने 25 पे सेल किया है, तो मैंने 30 का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। मेरा टेक प्रॉफिट, मेरा टारगेट प्रॉफिट विल बी लेट्स से 10 रुपीज़। अब यहाँ पे 30 रुपीज़ का मेरा लिमिट प्राइस है, तो आई विल गो विथ 31 एंड आई विल गो विथ 11। प्लेस ऑर्डर, प्रोसीड। ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया सर।
सॉरी ऑर्डर बुक पे जाऊंगा, ऑर्डर बुक में मुझे दिखाई देगा कि मेरा 25 रुपीज़ का मैंने लिमिट ऑर्डर रखा हुआ है। जस्ट टू शो यू, आप यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में आपका जो जीटीटी है वो आपका ट्रिगर प्राइस आप देख रहे हो। अब स्टॉप लॉस आपको 30 रुपीज़ का है और मेरा टारगेट इज 10 एंड मैंने लिमिट प्राइस उसका अगेंस्ट 3111 करके डाल दिया है। दिस इज करंटली इनएक्टिव और जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में दिखाए थे वो कैंसिल मैंने करवा दिए थे। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है, यू कैन मॉडिफाई दिस। लेट्स से मैंने 30 रुपीज़ रखा था, मैं इसको 35 कर देता हूँ स्टॉप लॉस को, एंड मेरे को टारगेट प्राइस 5 रुपये कर देना, 10 रुपये नहीं चाहिए, मैं और प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, ठीक है। And if you want to keep limit price as it is, you can leave it. But as I suggested right in the beginning, Nifty में there is a possibility. एक सेकंड, just a sec. Sorry for the disturbance. Just a sec. तो आई वाज सेइंग कि अगर 35 रुपीज़ अगर आप रखते हो तो 35 रखते हो तो देर इज अ पॉसिबिलिटी अगर सडन मूवमेंट आया तो दिस माइट गेट स्किप एंड दिस माइट नॉट गेट ट्रिगर, तो होने का चांसेस है। तो इसीलिए इसको टाइट नहीं रखना चाहिए। 35 का लेट्स से आई कीप 39 एंड 5 का तो चलो ठीक है, आई कीप इट एज लेट्स से 9। मॉडिफाई कर दिया मैंने, प्रोसीड। अब ऑर्डर बुक पे जाइए, आप देख लीजिए ऑर्डर बुक पे तो आपको 25 रुपये है ही, जीटीटी बुक पे आप जाके देख लोगे तो आपका ये मॉडिफिकेशन हो गया होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू प्लेस जीटीटी ऑर्डर ऑन द सेल साइड। बाय का भी दिखा दिया, सेल का भी दिखा दिया इस बार मैंने, ठीक है। नॉट एबल टू ट्रेड विद मोबाइल ऐप। if you're not able to trade with mobile app then please I recommend sir GTT तो पहली बार मोबाइल ऐप में अभी आने वाला है थोड़े दिनों में, so it has not come into the mobile app yet, but if you're asking in general कि आप मोबाइल ऐप से ट्रेड नहीं कर पा रहे तो I would recommend you to uninstall it and reinstall and then try again, अगर आप ट्रेड नहीं डाल पा रहे तो। if you have a specific question then I would request you to put a specific question probably. So once we place flash trade, then later modify in order. Order में जाके आप limit trade कर दो, then still charge is 7 or change to 20. Sir, everything you have to do with respect to execution is in flash trade. It should be in flash trade in order to take advantage of that 7 rupees. तो आपको जो भी चीज़ करना है वो 7 रुपीज़ का आप एडवांटेज यहाँ पर ही आपको बैठ के करना होगा इन फ्लैश ट्रेड। तो आप अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो फ्लैश ट्रेड से, so I will recommend keep trading within flash trade itself. Otherwise there is a note over here which you may encounter this kind of issues, and in order to avoid that kind of issues I would request कि आप थोड़ा मतलब बच के रहिए, मतलब in order if you have to talk. I can see that मेरा बीच में नेटवर्क it was issue था, so मेरा स्क्रीन भी नहीं अवेलेबल होगा and I may not be audible as well, so yeah, sorry about that. So just wanted to know if you put orders in flash trade and the market was negative and I wanted to carry forward next day, is it possible? Yes sir, मैंने आपको बताया कि अगर आपने सर इसमें दो चीज़ें हैं, राइट इन द बिगिनिंग यू हैव टू डिसाइड, अगर आपने समझो फॉर एग्जांपल 5 या 10 मिनट के लिए ही ट्रेड लिया है तो यू वोंट बी एबल टू मॉडिफाई इट एंड यू वोंट बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड इट बिकॉज वो 5-10 मिनट के बाद आपका ट्रेड कट जाएगा। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही आपको पता नहीं है कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर आपको दिन में ही निकाल देना है, तो आप क्या कीजिए कि आपका जो टाइम बचा है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि 1:30 बजे थे, अभी 2 बज गए हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास 1.5 घंटा और बचा है, इसका मतलब आई हैव रफली अराउंड 90 मिनट्स अवेलेबल 90 नहीं सॉरी हाँ 90 मिनट्स अवेलेबल है, लेट्स से 10 और ऐड करता हूँ 100 मिनट्स अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ना अपने सिस्टम में जाके 100 मिनट्स नहीं डाल के मैं 100 से ज़्यादा डाल दूंगा, यहाँ पर लेट्स से 120 डाल देता हूँ मैं। इसका मतलब क्या हो गया, 120 मिनट्स फॉल्स आफ्टर मार्केट आवर्स। तो आप यहाँ पर आके अगर आप देखोगे, इफ़ यू सेट योर टाइमर अकॉर्डिंग टू मार्केट आवर्स
मार्केट आवर्स के अंदर अगर आपका टाइमर फॉल होता है तो आपका स्क्वायर ऑफ होना ही है, एंड यू वोंट बी एबल टू मॉडिफाई इट एनीवे वंस यू हैव टेकन द पोजीशन। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर आप मार्केट आवर्स के बाद का टाइमर अगर डालते हो तो यू विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड दैट पोजीशन नेक्स्ट डे। अगर आपको वो भी नहीं करना है सो फॉरगेट अबाउट इट, टिल एक्सपायरी पे आप क्लिक कर दीजिए एंड देन सेव इट, टेक द पोजीशन एज यू वांट, स्क्वायर ऑफ व्हेनेवर यू वांट, and your position will be carried forward till expiry day. So that's how it works basically. um, so yeah, that's it for the flash trade execution algos का मैंने बताई दिया आपको। रिकमेंडेशन आपको पता ही होगा, वन क्लिक एफएनओ का रिकमेंडेशंस हम लोग ऑलरेडी देते हैं, राज भाई की टीम ही देती है ऑन अ डेली बेसिस। बास्केट ऑर्डर मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया, स्ट्रैटेजी बिल्डर मैंने नहीं दिखाया, let me just show you. You can click on basket order as well and you can click on strategy builder. Strategy builder पे जैसे आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको निफ्टी दिख जाएगा एंड विद द करंट एक्सपायरी। लेट्स से मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का लेता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का एक स्ट्रेटेजी मुझे बनानी है, तो लेट्स से मैं एटीएम का ही 650 बाय करूँगा एंड देन आई वांट टू सेल 700। तो यहाँ पे मैं 650 बाय कर रहा हूँ, 700 सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे उसका एलटीपी दिख जाएगा, 80 रुपीज़ पे मैं सेल कर रहा हूँ, 103 पे बाय कर रहा हूँ, यानी कि मेरा स्प्रेड इज अराउंड 24 रुपीज़ का मेरा स्प्रेड है। दोनों का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे बिड प्राइस आस्क प्राइस दिख जाएगा, डेल्टा क्या चल रहा है, गामा क्या चल रहा है, थीटा क्या चल रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर 19700 का कॉल का, एंड 19650 के कॉल का डेल्टा क्या चल रहा है, गामा क्या चल रहा है, थीटा क्या चल रहा है। यू विल बी एबल टू सी दिस, उसके अगेंस्ट में जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो। नाउ दिस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ इट, ये आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। और वंस यू क्लिक ऑन एनालाइज, आप देखना चाहोगे कि मेरा 5% अगर मार्केट का मूवमेंट ऊपर नीचे हुआ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होने वाला है। नाउ द पोजीशन दैट आई हैव टेकन, स्ट्रेटेजी दैट आई हैव क्रिएटेड, इसमें मेरे को 1300 रुपया मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांसेस है एंड मैक्सिमम लॉस 1190 रुपये का होने का चांसेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1% में 0% के बाद अगर 2% ड्रॉप होता है तो मुझे मेरा कितना लॉस होगा, अगर 2% बढ़ जाता है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। अगर 4% जिस पॉइंट पे मैंने पोजीशन लिया और अगर यहाँ से नेक्स्ट वीक तक अगर 4% निफ्टी बढ़ जाता है तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। ये पे ऑफ आप देख रहे हो। अगर आपको डेल्टा देखना है, गामा देखना है, थीटा देखना है, वेगा देखना है, तो यू विल बी एबल टू सी इट ओवर हियर। आप इसको सेव करो, लेट्स से बुल नेक्स्ट वीक प्रोसीड किया। आप यहाँ पर आके आप आपके स्ट्रेटेजी लेवल का डेल्टा, थीटा, गामा आप देखोगे। आपको ट्रेड करना है, आप ट्रेड पे क्लिक कीजिए एंड देन हियर यू विल बी एबल टू सी द एग्जैक्ट मार्जिन रिक्वायर्ड in order to take this position. If you click on include existing position और ये सब चीज़ अगर आप करते हो तो आप यहाँ पर आके कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 25,000 का ही मार्जिन आपको चाहिए एंड यू विल बी एबल टू टेक दिस पर्टिकुलर पोजीशन बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन इट। आपको लिमिट प्राइस कुछ डालना है, आप डाल सकते हो, बट देन you just have to remember that these two are not combined legs, these are all individual legs. अगर आप लिमिट यहाँ पर डालते हो तो all of the legs will be treated as individual legs anyway। तो ये एक सिंगल लेग आइटम जाएगा, इन सिंगल लेग जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ब्रोकरेज देखना चाहे तो ब्रोकरेज आपको 2 डिफरेंट पोजीशंस का आपको ब्रोकरेज लगेगा। एंड जस्ट टू व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट ब्रोकरेज, आई जस्ट वांटेड टू से निफ्टी में सॉरी अपना फ्लैश ट्रेड में एंड एग्जीक्यूशन अल्गोज में मेक श्योर यू रजिस्टर एंड यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और अभी हम लोग ने ब्रीज लॉन्च किया है। ब्रीज में इफ़ यू ट्रेड यूजिंग ब्रीज यू विल बी हैविंग 0 ब्रोकरेज यूजिंग ब्रीज एपीआई। तो ब्रीज एपीआई पे आपको यहाँ पर आना है, आपको आके यहाँ पे आपको ऐप रजिस्टर करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल डेमो, आप यहाँ पर कुछ भी यूआरएल डाल सकते हो। लेट्स से मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ही यूआरएल डाल देता हूँ। सबमिट किया, यहाँ पे आपका ये ऐप की और सीक्रेट की बन जाएगा। आप यहाँ पर व्यू ऐप्स में जाइए। अब मैंने ये डेमो का बनाया था, तो ये डेमो का आपका सीक्रेट की ऐप की बन चुका है। ये डीएक्टिवेटेड है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन एक्टिवेट। एक्टिवेट कीजिए, आपका एक्टिवेट हो गया। फिर आपको इसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद लेट्स से मैं दिखा देता हूँ आपको।
मैंने लॉगिन किया, उसके बाद मैंने 091 टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका जो भी होगा वो आप कर लेना। 91 मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। अब प्लीज पे जाऊंगा मैं, मेरा एक सेशन बनता है लॉगिन एपीआई सेशन। ये लॉगिन करने के लिए फिर से पूछ रहा है, जस्ट अ सेक, आई विल शो यू। मेरा ऑलरेडी एक सेशन चल रहा था, सॉरी फॉर दैट, दैट्स व्हाई इट हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। प्लीज एपीआई पे आया मैं, प्लीज एपीआई पे आया, this is opening this thing। ब्रीज पे आया, एप्स पे आया, मेरा ऐप एक्टिव हो गया है डेमो वाला। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन 965,089 सबमिट। मेरा ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग मी, बट वो एक सेशन की आएगा आपका। वो जैसे कि आपका आ जाता है, वो की आपको आपके कोड्स में आपको डालना है यहाँ पर आके। दिस इज द कोड बेसिकली आई हैव रिटन, so this is the key and you can just simply copy paste this code, put it आपको ऑर्डर प्लेस करना है, you can simply come here, you can place the order, इसको रन कीजिए and your orders will go through। तो अगर आपको डेमो दिखाना है, वैसे 3 मिनट बचा है, आई कैन शो यू दी डेमो क्विकली। बस कुछ तो पोजीशन खड़े हुए थे, आई जस्ट वांट टू स्क्वायर ऑफ दैट फर्स्ट। यहाँ पे ऑर्डर में पड़ा हुआ है, लेट्स से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, ये कैंसिल हो गया है। सपोज आज का दिन है निफ्टी का, एनएफओ ऑप्शंस मुझे बाय करना है, लेट्स से सेल करते हैं, सेल करना है लिमिट, मुझे 50 क्वांटिटी सेल करनी है एट अ प्राइस ऑफ, अगेन द सेम एग्जांपल, 20, लेट्स से 30 कर देता हूँ, 30 रुपीज़ पे डे। यहाँ पर आपको डालना है 19 अक्टूबर आज का दिन। एक्सपायरी डेट आपकी कौन सी है? 19 अक्टूबर 2023। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे ऑप्शन चेन में आता हूँ, तो ऑप्शन चेन में 19650 है। मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 19650 का कॉल है, मुझे सेल करना है। 19650 का यहाँ पे मैंने कॉल डाल दिया, यहाँ पे 19650 डाल दिया, और 19 अक्टूबर का मेरा एक्सपायरी है। यहाँ पर आज का डेट हो गया, यहाँ पर वैलिडिटी मेरा डे हो गया, मेरे को प्राइस 30, मैं इसको 25 कर देता हूँ, पहले जो हमने रखा था वही, लेट्स से 30 रखते हैं, वही बेटर है। 50 क्वांटिटी लिमिट में सेल कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ ऑप्शन एनएफओ एंड निफ्टी। आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपका एपीआई की सीक्रेट की एंड की सेशन ये आपका जनरेट होगा, जो मैं बता रहा था इसमें लॉगिन करने के बाद, वो सेशन की आपका यहाँ पर आएगा, देन यू जस्ट हैव टू रन इट। जैसे रन करूँगा, आप यहाँ पर आके आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस होगा। एक सेकेंड, तो नहीं है ना, तो नहीं है। ये ऑर्डर हो गया मेरा, 30 रुपये पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है लिमिट प्राइस में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फिलहाल 16 रुपये चल रहा है, यहाँ पे ऑर्डर आ गया है 30 रुपये में। सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ब्रीज एपीआई, एंड दैट्स इट। आई मीन 2-3 मिनट का वक्त था, 3 मिनट के वक्त में मैं जो दिखा सकता था मैंने दिखा दिया। गौरव, यू देयर? Next time maybe probably I may be able to cover a bit more, but then Sumit, we are here to help you out with the sessions. Every Thursday हमारे sessions होते हैं। या सर, या करो, just a second. Every Thursday हमारे sessions होते हैं Breeze API पर, you can attend that and you can learn about how to create strategies on your own and how you can make use of Breeze API and trade using Breeze API. So yeah, that's it. Over to you, Gaurav. तो वेलकम बैक गाइस। जहाँ छोड़ा था वहीं है, 650 के पास ही है अभी भी निफ्टी, बट मीन वाइल ड्यूरिंग while we were not here, at that point of time, let me share my screen first.
So जब हम नहीं थे, that point of time Nifty made a low somewhere around 618. So that was our target कि during the day Nifty जो है एक बार 618 620 तक आएगा. और at that point of time your option premium must have moved to 29 और 30 रुपीस, जो 28 से 30 का हमारा टारगेट था. तो अगर मैं उस वक्त का देखूंगा तो यस 29.5 के आसपास प्राइस आया भी. तो जिनके पास था या जिन्होंने होल्ड कर रहे थे उनके तो मेरे ख्याल से 1 राउंड ऑफ booking should have been done around those levels. Now at current levels, what we should do, so at 650, your put options have gone back again to 7 rupees. Call options, they have also declined sharply to just 15 rupees. But the view remain unchanged. Still, I don't expect an expiry beyond 19,650. 600 से 650 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए गौरव. और शायद मतलब मैं यहाँ पर पुट लूँ तो दैट इज समथिंग विच आई एम नॉट प्रीटी श्योर. तो यहाँ पर मुझे दोबारा से पुट लेना चाहिए. आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट अगर ये दोबारा से एक बार 10 के ऊपर जाता है ना तो आई विल लाइक टू अटेम्प्ट बाइंग पुट ऑप्शंस वंस अगेन. फॉर द टाइमिंग इट सीम्स लाइक कि अगेन का जो मार्केट में निफ्टी ने जो कंसोलिडेशन का मूव दिया था या 11:30 के बाद से अगर हम देख रहे हैं तो लार्जली कंसोलिडेशन है. छोटी सी डाउन टिक आई है एंड दैट्स इट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट हैज बीन कंसोलिडेटिंग. तो अगर ये 650 का पुट मुझे 10 के ऊपर दिखता है देन अगेन आई विल ट्राई टू बाय दिस. कॉल का मेरा अभी भी कोई व्यू नहीं है कि मैं कॉल बाय करूंगा. ठीक है, मार्केट अगेन नियर द हाइस है, बट अगर किसी ने कॉल तो I'm not sure, मतलब उसका किस तरह से पैसा बना होगा, क्योंकि at that point of time your call was 30 rupees and during that day not much upside have been seen. हाँ, अचानक से बात करते करते ही ये 26 रुपए 27 रुपए का हो गया. But my view remains intact. Okay, so no new fresh call as such from our end. 19,650 put, one round is done. After that, right now we're not looking out for any new trade as such, because market has gone above, like it's at 670 right now, and our view was कि 650 तक ही रहेगा market, and now we are maintaining that view. We don't want to go play against our view, so no fresh call as such in Nifty. Ones who have made profits can remain, like can wait, because we will not be taking any new calls there. But राजभाई क्या हम लोग 19,700 के पुट के आसपास देख सकते हैं? 19,700 का put is somewhere around 30 right now, and if we are expecting the market to go below, like to expire near between 600 and 650, then can we have a shot at 19,700 put option somewhere near 30 rupees? नहीं. Okay. Shorting करना is not something. Buying that 19,700 put, which is near 33, 32, 30, now from 32 it has come to 32, in that range. देखो गौरव, अगर मेरा डेटा दिख रहा है आपको, हाँ, तो 19,700 कॉल में भी आपके करीब 4 करोड़ शेयर हो गए. राइट, 19,700 पे, दैट्स राइट, है ना. तो उसके ऊपर मेरा तो व्यू नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा. हाँ, जो चीज 19,600 पुट में है तो सेम चीज ऑलमोस्ट जो है आपकी 19,700 कॉल में है. राइट. तो 600 नीचे और 700 ऊपर, इन दोनों के ऊपर जाना जो है इट डजंट मेक सेंस टू मी. पिछले आधे घंटे में क्या हुआ है कि आपके कॉल स्ट्राइक्स में भी एडिशन नहीं आया है, बट पुट स्ट्राइक्स में थोड़ा सा एग्रेसिव राइटिंग हुई है. सो इट्स सजेस्टिंग कि हाँ शायद मार्केट को थोड़ा सा ये हो रहा है कि हम क्या 650 के ऊपर भी हम सेटल हो सकते हैं. ठीक है, हो सकता है कि पिछले हाफ एन आवर 15 मिनट्स में इस तरीके का, क्योंकि मार्केट बस कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग अराउंड 650 लेवल्स, तो वो एक सेंस बना रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है शायद, बट आई विल नॉट बेट ऑन दैट. मेरे लिए 600 से 650 इज स्टिल द रेंज. हाँ, दिनेश सर. या गौरव. So राजभाई का व्यू था 620 तक एक बार आएगा, तो his view was done, मतलब वहां पे profits हो गए. Your view was कि 625 was the level where we should see one pullback and from there we'll go up. So basically Rajbhai's view is done, your view is also done. 625 से लेके now I think 681 के आसपास का high we have made. So we are still attempting a little bit more.
another 20-30 points. Yeah. Because I don't see any resistance till 690, 710. Okay. तो 700 राइटर जो आज सुबह गैप डाउन हुआ और जिन्होंने लिखा और जो कल वाले नहीं काटा, जब अब उनको थोड़ा सा स्ट्रेस देने का टाइम है ना. Okay, so I would say that our two experts are on two different tangents today. One is expecting a view expiry below 650, and one is expecting 690 to 710, where he doesn't see any resistance. So, sir, in this case, viewers, we do not want to confuse you guys. We will not take any trades right now because we have got two different views. So just to avoid any more confusion going ahead, we are leaving Nifty aside. So please, I hope you guys respect that view because we want everybody to be on the same page so that there's no confusion for you guys as well. So we will not take any further trades in Nifty. If you have any questions, we are more than happy to answer that. Shreyas Day not getting invitation for Friday meeting. Friday meeting invitations will be on Telegram. We give those meeting links on Telegram, so you guys can join our Telegram channel. This Friday we did not have the session, so that is why the links were not put in. But whenever we have a webinar, the information and the links are shared on our Telegram channel, so you guys can join our Telegram channel before that. Okay, NBCC, Prabha sir, sorry, it is not an FNO, so we won't be taking that stock. So sorry for that. Any other stock viewers? If you have any queries, you can put it in the chat, or else we'll close the live session in 10 minutes because we have got two contrasting views from our experts, so we don't want to confuse you guys there. Okay. Rajbhai, Gaurav, seriously speaking, Nifty Bank had a very crucial intraday resistance now. Okay, you want to share your chart, sir? Yeah, I'll do that. Just one second. Yeah, I'll ask Rajbhai to stop sharing. Yeah. So, looking 15-minute resistance, hourly resistance, okay, and in the daily mein nahi hai kahin. So these two resistance, 15-minute and hourly. Now this is the key one. We are at 665 Nifty, and this is that resistance. If it by any chance, that's why I said my all eyes are on Bank Nifty. If it takes out this level of 44,050, then further acceleration. Otherwise, what Rajbhai said, that 650 level, that's what will happen. So it's a key make or break level right now. Okay. So basically, you are bullish, but you are bullish with only when if Bank now Nifty I would be further bullish only if this 44,050 is taken out. From today's expiry point of view. Purely from today's point. Okay. So from today's expiry view, okay, cool. So that's there. Any view on Bhel and sale? Okay, Rajbhai, Bhel to we have covered. Sale ले लेते हैं. We'll take one from this. देखिए सेल बहुत अच्छे लेवल पे है. अभी जो वोलेटिलिटी मार्केट में आई है और सितंबर में आफ्टर मेकिंग हाई नियर्स 104, स्टॉक हैज गिव अप ऑल द गेन्स. नाउ हियर ऑनवर्ड्स अगर ये आपका अगस्त का जो लो है हमारा समवेयर क्लोज टू, I wouldn't look at the intraday lows, but 8430, that level should be respected. And थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर है, वो तो बात है ही इस स्टॉक के अंडर परफॉर्मेंस के लिए. बट एट करंट लेवल्स आई वुड से गुड एक्यूमुलेशन पॉइंट. स्टिल अवॉइड गोइंग लॉन्ग थ्रू ऑप्शंस, इधर थ्रू कैश, और अगर फ्यूचर्स के थ्रू कर रहे हैं तो विद अ प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी. इसमें जान तब आएगी जब ये 91 के ऊपर खेलना चालू होगा, चलना चालू होगा. तब तक शायद इसमें वो जान या मोमेंटम हमें देखने को ना मिले. बट मेरे हिसाब से इसकी डाउन साइड्स आर डन. सो विद मार्केट रिकवरी नेक्स्ट राउंड ऑफ अपसाइड वी माइट सी इन मेटल स्टॉक्स. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जेएसडब्ल्यू स्टील की भी बात की थी. तो ओवरऑल मेटल में आई फील देयर इज गुड इनफ
juice at current juncture. Okay. View on Grasim. ग्रासिम ने कुछ राइट इशू अनाउंस किए हैं सर, 3,000-4,000 करोड़ के. सो फॉर द टाइम बिंग इट माइट गेट स्टक, बट ओवरऑल ग्रासिम और द रेस्ट ऑफ द सीमेंट स्टॉक्स दे वी रिमेन पॉजिटिव देयर. सो ग्रासिम मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें तो अनाउंसमेंट आया है, तो थोड़े टाइम के लिए ये स्टॉक फंसा रहेगा. But it shouldn't move below 1875, 1900 levels. That should be your stop loss in case of you are holding your long positions. Okay. View on GAIL. गेल ने थोड़ा सा धोखा दे दिया था लास्ट मंथ जब नीचे आ गया था, बट दोबारा से मतलब आप अगर पीएसयू पैक देखेंगे तो जो लो बीटा है और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से एक गेल भी है. So I will hold to my long positions here if I'm having. For fresh longs or from the stop loss perspective, I'll keep a watch on 126. Till stock is trading beyond 126, there is a probability that the stock might move up to 135 or 140 levels. So overall, we are quite positive here. Okay. दिनेश सर, आपको ये गेल कैसा लगता है? गेल सुपर सुपर, मतलब एट अनदर टेंजेंट है वो. लास्ट थर्सडे भी मैंने बोला था कि जो पीएफसी, आरईसीएल, एचएएल, बीईएल ने लास्ट 2 क्वार्टर किया था, अब गेल का नंबर लग रहा है वो सब में. एक अलग टेंजेंट में सुपर स्ट्रांग है वो एकदम. Okay. View on Trent. ट्रेंड देखिए, इंटरडे पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, मतलब इट माइट मूव टुवर्ड्स 2100, 2130 लेवल्स. तो वो ठीक है, बट ओवरऑल कोई मुझे बहुत बड़ा मूव होते हुए अभी नहीं दिख रहा है. रिजल्ट पर काफी कुछ डिपेंड करेगा, कैसा रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से इसमें मूव करेगा. और ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो स्टॉक अच्छा खासा चला है पिछले 2-3 महीने में. तो मेरा तो कंसोलिडेशन का व्यू है इसमें. 2130 इज समथिंग विच वेयर इट माइट फाइंड रेजिस्टेंस इन द करंट सीरीज. फिर उसके बियॉन्ड देखते हैं अभी तक. Okay. Okay. View on Bank of Baroda. Okay. Hindalco. Dinesh sir. Metals, yes, but they've had a very strong run. The mining stocks, you see NMDC, so these ones. So my focus is more on the metal users like Okay. JSW, Tata Steel, sale, like what Rajbhai said, sale above 88 is will see a massive short covering scenario above 88. Or similarly, Hindalco, I would, I think that, within the sector, there is a shuffle happening from mining to consumer. Right. Okay. Okay. I'll take next one. We want Bank of Baroda. I think we have covered Bank of Baroda. Okay, I'll ask a very specific question, sir. Should we go with Ultratech versus Ambuja? Someone's asking what would somebody prefer? Should prefer I would prefer Ultratech, क्योंकि अंबुजा के साथ एक अडानी. अलग सेंस चल रहा है. आज अल्ट्राटेक का रिजल्ट भी है. आई एम नॉट श्योर वेदर इट हैज कम और नॉट. वी आर इन दिस लाइव सेशन, बट एनी डे आई विल प्रेफर अल्ट्राटेक ओवर अंबुजा. वो अंबुजा इज मोर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कि हाँ ये है, अच्छा होगा, सारी चीजें होंगी. और अदानी का स्टॉक है, अदानी ग्रुप का है, तो दे डू हैव अ हायर बीटा देन द रेस्ट. But Ultratech being the largest cement company, being a Nifty index stock, I would prefer Ultratech over Ambuja. Okay. Given that specifically. Bank Nifty or Nifty view on expiry. Mandar, we will take this question tomorrow. Okay. Okay. So Rajbhai has some यार बात वही है कि मतलब व्यू मेरा वही है कि 650 के नीचे होगा, जस्ट बिकॉज मार्केट हैज कम डाउन फ्रॉम हाईज की 770 से 650 आ गया, तो शुड वी लुक इनटू इट. तो इट कुड बी मोर ऑफ अ हीरो जीरो की 6 रुपए 6.5 रुपए का पुट ऑप्शन है. राइट. ले लें. मतलब एनीथिंग बियॉन्ड 642 वी विल बी इन द मनी. बट दैट्स इट. मतलब माय व्यू हैजंट चेंज. Okay. So viewers who want to take hero zero bet, one can again take 19,650,
19650 put option at 5 rupees, between 5 and 6, anywhere between 5 and 6 rupees one can buy 19650 put with a target of double. डबल नहीं, ये तो 5-6 टाइम होना चाहिए अगर होता है तो. हाँ, so the stop loss will be zero. Stop loss would be zero, and target usually the targets for zero hero is double. But let's see, we'll see where does this go. So anyone who's looking for zero hero in Nifty, you can buy 19650 put option near between 6 and 7, and now it is at 7 rupees. I said, oh, sorry, 5 and 6 was given. Now it is at 7.35. So you can enter at this level as well. So we'll see the target to be around 12 rupees, 15 rupees, but we'll update on that. That we'll update. So we are here on the live stream today. We'll stay. So zero hero is 19,650 put option. Okay. So Dinesh sir, we are going with Rajbhai is going with put. So zero hero 19,650 put near 6 rupees, 7 थोड़ा rupees. सा मैं एक्साइटमेंट में आ गया हूँ अचानक से जो गिरा था. नथिंग, मेरा व्यू केवल इतना है कि 650 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए. हाँ, अगर 650 के नीचे ये 10 रुपए भी दे देता है तो शायद ये ऑप्शन डबल हो जाए, एंड दैट्स द ओनली वे आई एम लुकिंग इनटू. एंड सर जो हमने 19,700 पुट की बात की थी 30 रुपए के आसपास, दैट इज नाउ 45 प्लस. So Rajbhai का व्यू जो था about that we may see a expiry below 650, that seems very likely now. So let's see this zero hero. गौरव से 5 मिनट के कैंडल पे व्यू नहीं बनाने चाहिए. अगला कैंडल हो सकता है ठीक ऊपर हो, बट ठीक है व्यू. Yes, let's see. Let's see. So viewers who 50 put option as zero hero, please put it in the chat that आपने लिया है कि नहीं. So हमें भी मालूम पड़ेगा. Our recommended price was between 5 and 6. Now it was at 7 also. We recommended at 7 as well. So please let us know if you have entered this option, put option of 19,650 zero hero. If yes, please put it in the chat box. Okay. As we speak, I think it had hit 10 rupees as well. So you have to be very quick here, guys. You have to be very quick depending. It went to 10 rupees as well. It is at 12. It is at 12.5. Now the target is doubled. Now we leave it up to you guys. Now it is up to you how you book it. You can trail it to your comfort. You can book it, whatever you do. We have made it double. 6 cut 12.45 was the level which I saw. So yes, we have another call which has been double now. Viewers, if you have bought, if you have booked profit, that also please let us know. But the call went to 2x. Now it is again 9 plus. Up to you. Still it is in 50% gain. बोल रहा था तुमने मेरे से सस्ता है सारे. So viewers, anyone who has entered booked, if you have booked part, you can hold it, because now if Rajbhai's view of 625 becomes true, this can go to 20 as well. But obviously, please don't be greedy here. If you are in profit, please keep booking regularly. It is at 9.55, 10 rupees. So if you're happy with that much, it's better. But yes, hats off to Rajbhai, because his view was always saying that
we may see an expiry below 650. Nifty went to 681. That time also we were like, he was very sure that 650 ke niche hi milega, and that's what happened. So yes, if you have booked profit, great. If you are still trailing it, please trail it with the proper stop loss. That is more important. And if you have made profit, please hit the like button. We are more happy with getting the likes. So yeah, that's our what do you call it? That's our premium. Okay. Am I audible, guys? I am not seeing any reactions from anybody. Am I audible? Okay, I am audible, but I think I'm getting very few reactions. So yeah. Okay, guys, I think this put is now near 11.5, 12 rupees. Yeah, it is at 12. I've seen 12 tickers, 11.5 to 12 rupees. It is flickering. So yeah, Raj भाई, congratulations. अभी क्या मुबारकबाद, तो पार्टी दे रहे हो कि नहीं आप आज हमें? Raj भाई is ignoring me as usual. Booked at 12. Great, great. Ones who are trailing, please trail. Ones who are happy holding this, please can hold it with proper stop loss, because now it has become more than double. It was more than double, and yeah. राज में कुछ और देख सकते हैं, जैसे 19700 आपने मिस किया मेरे को ऐसे इग्नोर करके, 650 है, 19600 पुट देख सकते हैं 1 रुपए पे। देखो मेरा मस्ती कर रहा हूँ राज हाँ भाई। करो, लेकिन सुबह से जो अपना व्यू था, और अभी भी हम गलत जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 650 के ऊपर नहीं जा सकती, बट पैसे बन गए। पैसे बन गए। एंड देखो, अगर कोई सामने से बोले तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि इतना नीचे से अपसाइड आई, 600 से 680 गया, वी हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग आल्सो। यस एब्सोल्युटली। सो दैट इज आल्सो फाइन, बट एक होता है कि व्यू बना के गलत होना, और एक होता है बिना व्यू बना के गलत होना। तो आई वुड प्रेफर हैविंग व्यू एंड देन गो डाउन। Absolutely. Having view and going wrong is more important than not having a view and not doing anything, because we are here for that. So viewers, how do you predict the expiry strike price? प्रिया जी, जिस दिन पता चल जाएगा मुझे, मतलब नहीं कह सकता। Usually, Priyaji, the usual thing is that we usually Rajbhai looks at the money or in the money or slightly out of the money strikes as well, and based on his view, he decides what to buy depending on the price that it has. So that is his analysis, I can say. अच्छा करो, देखो 15 मिनट में पहली बार हमें पुट्स में क्लोजर मिला है। हाँ, अभी भी, लेकिन वहां पर करीब 3.5 करोड़ शेयर्स हैं। राइट। तो लोगों का अभी भी जो ओवरऑल डेटा से जो बायस आ रहा है वो यही है कि जितना पास हो सके 650 के करें। हाँ, क्या है कि मैं क्यों 650 से नीचे की बात कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि हमने जो सुबह गैप डाउन ओपनिंग देखी है, हाँ, उसके बाद जो कॉल राइटिंग हुई है, चाहे इस अपसाइड में कॉल राइटर्स का क्लोजर हुआ हो या ना हुआ हो, एंड गिवन द ग्लोबल सिनेरियो एंड एवरीथिंग, full fledged recovery seems very unlikely to be. Yeah. So that was the view, and let's see. मतलब if the thing is the delta of this strike is also 0.55, and if we see a 10 rupee fall in Nifty as well, the delta will become 6.6 easily. 0.6 Yes. का delta हो जाएगा, and this premium can also become 18 from here if it goes to 630 times. So let's see if we get that move, because now this strike is again approaching 11 rupees, 11 and a half. So let's see. So there will be a lot of volatility now, because we are approaching the last hour of expiry. I can't say last hour, I think last 50 minutes, because 310 is where the major action gets over, and we are at 225. So yes, guys, today we had two good action. Again, should we wait for action to happen? Hemant sir, that's what I said. So now it is very now it is the time where action starts, and easy 20 points, 15 point move from here on either side. Obviously not on our side, it can be on either side. So this is the action time. Let's see how it goes, but view is very clear from our expert Rajdeepak Singh that 650 के नीचे ही जाएंगे, and he wants to hold this view. Dinesh sir, Raj bhai has a question for you. Yeah, Gaurav, tell me. Yeah. सर, ये अपोलो हॉस्पिटल को देख के क्या लगता है सर? एक सेकंड,
Okay, guys, now that put Apollo option is Hospital 13 plus. Yeah, Dinesh sir, sorry, you can start. Yeah. अपोलो हॉस्पिटल में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, उससे ज्यादा क्लैरिटी इसमें है आपका मेट्रोपोलिस में, और उसमें ऑप्शन लिक्विडिटी पुअर है, बट वो इससे ज्यादा है, बिल्कुल क्लियर नहीं है अपोलो हॉस्पिटल, टू मच वॉलेटिलिटी. Dinesh sir, can you get the Nifty chart on your screen? Yeah, I'll ask sure, Rajbhai sure. to stop sharing. Himanshu, that's what I said, na, ki we can expect action, but we can expect action by either side. So shouldn't we wait for we sir, see, it has become double. So once your option becomes double, why do you want to wait? Like, you can book parts and wait. Not booking anything would become problematic because action can happen, like it can move up also, right? It's not mandatory that it will go down only, na. So that is why. Yeah, Dinesh sir. Yeah, tell me. Sir, Nifty hourly, if you see, Yeah. it took the resistance near the Kijun, if we can say. We can say. Yeah, there it, both the बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उधर ही था, दोनों का रिजेक्शन एक ही जगह से हुआ है आज, और नाउ वही है कि कैसे इसको अब आगे जाएगा. वन इंटरेस्टिंग फैक्टर विच आई स्पॉटेड यस्टरडे, व्हेन रात को गिफ्ट निफ्टी क्रैश हो रहा था, इज दिस. ओके, आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट फॉर एवरीवन, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. You see what happens after a large red candle. Okay? See what happens in the market. The movements which happen. See, large red candle, we have a follow through up. Right? Large red candle, follow through up. Large red candle, next candle inside, then dip. Okay, again. So each large red candle has seen a next day weaker opening and a bounce back. Yeah. That was the logic I had today. This is trying to, pull its way back up now. That's why, so this is also a classic example of that. Large red candle, pull back. Yeah. So जितना इनको ड्रामा करना होता है ना मार्केट में, एकदम सीवियर सीन, वो एक दिन करते हैं फिर ड्रिफ्ट आउट, एक दिन करते हैं फिर ड्रिफ्ट करते हैं, मार्केट को कंटिन्यूस फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं दे रहे हैं इंडेक्स. राइट. सो यू हैव टू कीप दैट फैक्टर इन माइंड आल्सो गोइंग फॉरवर्ड, कि विल वी सी अ रिपीट ऑफ this or we are going to see a dump down, so if we see a repeat of this, then kuch aisa maybe. Okay. Someone next to me is smiling a lot. He's smiling a lot today. राज भाई, स्माइल के साथ साथ थोड़ा कमेंट्री दे दो, अच्छा लगेगा. व्यूअर्स है. Ultratech is at new Sir, high. Ultratech is at new high because of the results have come in. Not new high, days high, but yeah. Ultratech is at 8390. I think that was the last level. It is at 8400 any chance? नहीं, अभी नहीं है, but I believe it will be taken. हाँ, 8400 आ गया. It should take it out. रिजल्ट आया है, रिजल्ट को लेकर मतलब कैसा है यहाँ बैठकर हमें नहीं पता, एंड फंडामेंटल एनालिस्ट आर बेटर इन दीस थिंग्स, equipped. यस. सो बट ओवरऑल निफ्टी पर से ओके राज भाई, ये 14 रुपीज हो गया है, ऑलमोस्ट 14.5, अभी 15 की तरफ जा रहा है. अब क्या करें? मेरे को 620 भी हो सकता है, तो ये आपका 14-30 रुपीज का भी हो सकता है. राइट. सो दैट इज अप टू यू नाउ कि हाँ, देखो, मैं अगर ट्रेड कर रहा होता, मैंने सिर्फ 6 रुपए या 7 रुपए का लिया है और मैंने इसको जीरो हीरो की तरह लिया है. हाँ. तो फिर दैट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं इसको 6 का 12 में निकलूं, 18 में निकलूं या 30 का वेट करूं. अच्छा, वो आप कितने लालची हैं उस पर डिपेंड करता है. तो आप अपना लालच को काबू में रखें, बेटर रहेगा. ठीक है. काश मैं भी ट्रेड करता राज भाई, आप करने देते नहीं मुझे.
Dinesh sir, he doesn't let me trade, so I'm just putting it on record here. Okay, I have sold 1916 and then okay, everybody has made profit. I guess today everybody has made profit. And if you have made profit, please say yes. कुछ तो भेजो यार, हमें भी समझ में आए, because very few people are. We have 500 plus people watching and only 3-4 people are saying. If you have made profit, please put a thumbs up. Yes, no, something's for our referral as well. Please, guys. Yes. Thank you, Shrikant. Thank you, Mandar. Thank you, Sunil sir. Sunil sir, good to see you on the live session. I think you are a regular watcher of our options की बात ICICI Direct के साथ. Dinesh sir, he's a regular watcher. Yes. With Mr. Naresh Oberoi, I remember these names. So thank you so much, guys. Guys, just one thing. I believe you guys are trading with ICICI Direct only. So I hope what we are doing is for the ICICI Direct and paper trading is always good, sir. You will not lose money even if I'm wrong. वो मुझे बोल रहे हैं. Sandeep sir, I'll do that next time. Great. Everybody, today was a great session for everyone, I think. Okay, guys, if you guys realize it has crossed 18, it has crossed 18 as well. So yeah, I think everybody is busy with looking at their profits today. Our entire derivative team is also here, so everybody is happy. So it's at 21. Yeah, it is about 20 now. This call is almost 3x. So everybody, happy profits. Happy profits. जो है रखे हुआ नया नहीं करने वाला. Raj bhai is now very content. He's like कि अब कुछ नया नहीं लेना है. We were asking about can we look at 19600? Okay, that's great. We have made 3x profit. So everybody, great. Like भेज दो यार. 53 likes है. We have more than 350 people watching. At least, can we take it to 100 likes, please? If we can take it to 100 likes, we would love to see that 3-figure mark. So if we can, guys, thank you. Okay. So yeah, I think we did two calls, both like we had two profits. One was doubler, one was also near 18 to yeah. And today India and Bangladesh. Yeah, so it's, I think everybody made profit. It's India Bangladesh today in Cricket World Cup. So अब cricket देखते हैं. यहाँ तो जीत लिए. दिनेश sir. Yes, एकदम हमारे राज भाई तो बोल रहे हैं हो गया मेरा. He's तो in full mood of packing now. Okay, so viewers, we'll stop here. We'll stop the. Thank you so much, Sandeep sir. It means a lot for us. Thank you so much, Sandeep sir. So yes, guys, we are winding up the session. Everybody made profit. Last call of 0 Hero went 3x almost. सब लोग profit book कर लो, अच्छे से lock कर लो और अभी भी double पे ही है तो lock कर लो उसे. It is near 12.5. Lock your profits. So that is there from our end. That's there from our end. Rajbhai, thank you so much for being a part as usual. Thank you, Dinesh sir. Thank you, Sumit. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, everyone, for joining us. Thank you, everybody. Bye. And bye-bye. see you guys Bye. next Thursday with the same Josh and hopefully with the same level of profits that we make. Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.